Hello, 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 hello. इसमें बड़ा हेलो 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 हाँ, सुनो ये ऑडियो वाली लीड इसमें लगी हुई है। हेलो हेलो माइक चेंज करो। हेलो हेलो बंद था क्या अभी?
हेलो 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 ऑन तो है, देखो ना, ऑन कर दीजिए। रिव्यू कर दे, रुकिए। हेलो, वॉइस तो हाँ, ऑडियो आ रही है। हाँ, हेलो हेलो हेलो
Hello. चल रहा है, उसको करिए।
Hello. Hello. Mic check. One. Hello.
Ultra beats on the track.
kindly take their seats. We are about to start in a few minutes. Request you to put your phones in silent mode. Ultra beats on the track. Hello, 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 hello. A very good morning to you, ladies and gentlemen. Welcome to Bird Lucknow, which, in association with NABARD IDD head office, is conducting this all important seminar on best practices. Hello, hello, Yesterday, we hello, had discussions on hello, hello, governance, hello, hello, technology, and best practices. hello, hello, Taking the seminar forward, we start the day with a round hello, of hello, hello, discussions hello, on hello, traditional credit hello, hello, functions, hello, 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 newer hello, credit hello, hello. functions, non credit functions, and so on. The list is endless and the sky is the limit. To do the honors, I request our CGM Shri Vivek Sinha from Department of Refinance, NABARD head office, to come on stage and chair the panel. Other panelists are Shri Sharwan Manta, MD, Himachal Pradesh State Cooperative Bank, Shri K.I. Hello, hello, Sharif,
resource hello, hello, person, BDPIC, hello, hello, TSCAB, hello, hello, Hyderabad, Shri VM hello, Sakya, hello, hello, CEO, Rajkot hello, hello, DCCB, hello, Gujarat, hello, Sujan hello. Sarkar, कॉलर कौन कौन से additional हैं? RCS and CEO, Hooghly DCCB. हेलो 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 Request the हेलो हेलो panelists to please come हेलो on stage. हेलो 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 पास लाना पड़ेगा हेलो 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 कौन सा है हेलो 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 Over to you, Sinhaji. Esteemed colleagues from NABARD and senior officers from the cooperative sector, very good morning to all of you. It's a nice and pleasant morning and a perfect day to start the second day of this national seminar. Yesterday, we had some very interesting discussions on some of the major issues that the cooperative banks are grappling with. We discussed about the corporate governance, technology adaptation, and the last session was about the innovations that are taking place at the grassroots level. In fact, it was very heartening to hear some of the major innovations that the packs are undertaking. And I think it sets the stage perfectly for this session today, which is on business diversification of banks, of cooperative banks. I think the cooperative banks are the oldest banking entities in the country, more than 100 years old. If we trace the evolution of the cooperative banks, I think most analysts would divide this into three phases. That is from independence to the early 60s and late 70s. Thereafter, from the 70s to the 2000 and 2000 till the present day. If we look at each of these stages, I think once we gained independence, the country was grappling with issues about food security, food scarcity. There was subsistence agriculture happening in the country, and there is no doubt that during this phase, the cooperatives were the true friends of our farmers. They were in terms of both credit and non-credit delivery of products. Their share in the GLC was, in fact, very, very good during this phase. During the second phase, several developments happened in our banking industry that really, kind of transformed the way banking took place in the country, especially agricultural banking. Some of these steps, all of you are aware, but just to reiterate, I think the first was that the ushering in of the green revolution that took place. I think the agriculture changed dramatically in terms of the credit intensity that was required to kind of fuel the new technologies that were coming in the space of agriculture. The second development, I think, was the nationalization of the banks. That ushered in an era of social banking. So most of the banks till that time, I think the farmers had really no go but to go to the cooperative banks. But now the bank nationalization took place. Another two developments that were critical during this phase, I think, was one was the introduction of the concept of priority sector lending, and the other was the lead bank scheme and the area approach that came in. I think for the first time, uh, public sector banks had to, were forced kind of to lend to agriculture. And we also took up agricultural credit planning in a kind of systematic way with the introduction of the lead bank scheme. Also, I think in the mid 70s, the RRBs came into play, and therefore now the agriculture required intensive credit, and also I think besides requiring credit, there were new players in the field that the farmers could turn to. So I think the share of the cooperative banks during this stage in the GLC started dwindling. Another few developments that took place was, of course, in 1992 with the financial sector reforms, and also towards the end of the 90s, I think, with NABARD introduced the pioneering concept of Kisan Credit Card that really kind of revolutionized the way that we look at agricultural lending. So there was a huge demand for credit. It became easy for banks to give credit, and it was also hassle-free for the farmers. These were some of the developments. Uh,
if we look at the last phase from 2000 till the present stage, you will find that several other players came into the play. Private sector banks were now aggressively looking at, agricultural lending. There were some new entities in terms of NBFCs and NBFC MFIs that came in, and the cooperative bank shares further started dwindling even further. If we look at some of the data that was thrown up by my friend Mr. Subrat yesterday about the share of the cooperative banks, I think you will find from the year 2000, in the year 2000, the share of the cooperative banks in the GLC was to the tune of around 40%. And as on date, it has come down to 11%. Whereas at the same time, if you see the share of the commercial banks in agri lending, it has increased from roughly 53 to 78%. So this is clearly non-sustainable anymore. We have to, there is no other go but for the cooperative banks to diversify and look at other products if they have to survive in this new age era of banking. Even if we look at the portfolio of cooperative banks yesterday, again the figures were put before you. I think the share of crop loans in cooperative bank portfolio is 93%, whereas for the term lending is only 7%. So, of course, interest subvention is one main, reason where some of the lending in the area has been distorted, wherein more and more, I think even term lending needs of the farmers are being met uh, uh, by, the KCC because of the interest subvention. Of course, that factor is there, but still, even if we account for this factor, you will see that the entire portfolio of cooperative banks is focused on one particular sector. Now, I would like to put before you 3, 4 points why I feel that there is no other go but to go in for business diversification. The first is from the perspective of risk. I think there's a huge concentration risk. If 93% of our portfolio is only in one sector of the economy, it gives rise to huge risk. What if the monsoons don't take place? What if there's some natural calamity or even an announcement of a debt waiver scheme? It impacts the balance sheet of the banks hugely. So we must diversify this risk. We have to diversify our product portfolio. The second is from the earnings perspective, I would say, even if you look at the net interest income and net interest margins of these banks, you will find that even if yesterday, I think the figures put before you was that the cost of funds of cooperative banks is roughly to the tune of, say, between 5 and 5.5%. For the sake of argument, if we assume it is 5.5%, if the banks, cooperative banks, use their own funds, and they are lending at 7%, and we take interest subvention of 1.5%, that makes 8.5%. So what is the net interest income margin available left to you? Only 3%. So I would put before you, do you think this 3% is enough for you to take care of your risk cost and your management cost and also make, enhance your balance sheet? It is a point for all of us to ponder over. Even if we look at the concessional funds available from NABARD, say STSAO at 4.5%, and you take the margin between 4.5 and 7%, I think the margin shrinks even further. Again, it is not enough to take care of our risk cost and our management cost. The second perspective, so from an earnings perspective, I feel that whereas if you look at LT, I think the banks can easily finance at 12, 13%. And if their cost of funds is only 5.5%, you can calculate the margins available. I think it is very clear arithmetic for all of us to see that diversifying is definitely a healthy trend for all our cooperative banks. The third perspective I'd like to put before you is the need of the economy. India is now on the cusp of, it has taken off. It has emerged as the fifth biggest economy in the world, and we are soon, scheduled to become the third largest economy. Is it sustainable for such an economy to, rely only on agriculture? Obviously not. We have to move from the primary to the secondary sector. We have to move towards that. So even the needs of the economy demand. Further, agriculture is not in a position to absorb this, huge amounts of labor that is involved in agriculture only because of lack of any other opportunity. So we must try and absorb this, teeming labor force that we have by financing more and more MSMEs and by financing other commercial sectors of the economy. And the last perspective,
I think I would like to put before you is the farmers that we all, are all in the service of. I think all reports very clearly say now that the income of the farmers, now more than 50% of the income we get is not from agriculture of the farmers. So even if we have to look at, increasing the farmers' income, it is very, very important that we have to, get them into other areas other than agriculture if we have to take care of the development. So I think with these things, I would like to, say, so if these are all the needs that are required, then why is it that the cooperative banks are not diversifying? Is there a lack of potential? Obviously not. There is enough potential in the sector. Do we have a lack of appraisal skills, or is there a lack of unwilling or willingness on our part to lend to these areas? These are some of the issues that I would like to pose before my fellow panel members today. And I'm very privileged to have a very good panel before me. I think all the areas are very, very well represented. We have a representative from the north, south, and east and west. So it's a good panel. We have with us Mr. V.M. Sakhia, who is the CEO of the Rajkot DCCB. We have Mr. Mantha, who is the MD of the HP State Cooperative Bank. We have Mr. Sharif, who is in charge of the BDPID cell in Telangana STCB. And we have Mr. Sagar Sarkar, who is the CEO of Hooghly DCCBs. So just to set the tone, I think we are already a bit late. Our session was for 1.5 hours. So I would like to give my panel members around 10 to 15 minutes to present before you what their banks are doing in these areas. So around 10 to 15 minutes. After that, I'm sure there are many other people in this hall who would like to share briefly their experiences on this diversification. So I would leave about 10 minutes for them if they want to share. That would lead about 10 to 15 minutes for any question answers. So with those words, I'd like to formally start the session. May I invite Mr. Sakhia, CEO, to kindly make his presentation. Thank you. नमस्कार, myself VM सखिया, CEO राजकोट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। सबसे पहले ये नवरात्रि के पवित्र दिनों में नाबार्ड ने और बर्ड ने जो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस इन कोऑपरेटिव सेक्टर में जो इसके हिसाब से मैं बर्ड और सिपेक, नाबार्ड एचओ और आर ऑफिस अहमदाबाद का मैं आभार और शुक्रिया अदा करता हूँ। इस कार्यक्रम में प्रेजेंट सीओ सर, नीली कपूर सर, विवेक सर, पार्टिसिपेंट ऑफ द ऑल कोऑपरेटिव सेक्टर्स, मैं सबका राजकोट जिला सहकारी बैंक हिसाब से मैं हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। सबसे पहले ये नवरात्रि के परम दिन है, दुर्गा को मैं प्रार्थना करता हूं कि हम आप सबको और पूरे कोऑपरेटिव फैमिली को सुख, शांति और समृद्धि का प्रदान करे, इसलिए मैं माता जी को प्रार्थना करता हूं। और अभी जो मेरा सब्जेक्ट इन द कोऑपरेटिव सेक्टर एंड बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, तो इसके बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बैंक का थोड़ा बेसिक डिटेल डाइवर्सिफिकेशन करना है तो एक्चुअली बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए उसके आनुषंगिक जो सहयोगी बात है वो क्या होनी चाहिए कि इसके हमारा ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लोग हमारे साथ जुड़े हुए। इसके लिए मैं बात करता हूँ, सबसे पहले श्री राजकोट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव फर्स्ट पेज, ये नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। Incorporated in the 1959 and get RBI license in the 1994, and bank is operate the two district Rajkot and Morbi. Bank's mission and vision. Bank's president chairman Sri Jayesh Radaria and board of directors have a vision fulfill credit needs to farmer for each and every asset created to him and to provide then loan adoption of the modern agriculture with the reasonable interest rate and within at least possible. मैडम ये स्क्रीन में कर दो ना प्लीज। ओके, सबसे पहले मैं बैंक की प्राइमरी बेसिक डिटेल की बात कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ ब्रांचेज हमारी बैंक की 199 ब्रांचेज है एंड लॉकर फैसिलिटी, सेफ डिपॉजिट वर्ल्ड की फैसिलिटी 105 ब्रांचेज में है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय और बैंक के 1107 एम्प्लॉय है
of which 843 employees trained in the various stage. ऑडिट रेटिंग लास्ट 51 ईयर से बैंक का रेटिंग ए ग्रेड है और एफिलिएटेड सोसाइटी बैंक है जो 187 ऑफ विच 462 पैक्स है। बैंक डेवलपमेंट की चार्ट की मैं बात करूं तो 5 ईयर में बैंक ने जो डेवलपमेंट किया है तो 2018 में बैंक डिपॉजिट 4305 थी, अभी वो 2023 में डिपॉजिट 8360 ऑलमोस्ट हो गई है। जो हमारा लोन पोर्टफोलियो है वो 300 का था, अभी वो 5900 के पास पहुंच गया है। इसका मतलब कि लोन और डिपॉजिट में 4000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और बैंक का जो अभी 14,000 करोड़ है। मुझे आपको ये बताने की रही है कि ये इस बैंक का सीईओ का चार्ज मैंने 2017 में लिया था, 5 साल पहले मैंने चार्ज लिया था इस बैंक का और मेरा एक गोल था कि 2020 बैंक का बिजनेस जो 7,000 करोड़ था वो 10,000 करोड़ क्रॉस करने का मेरा जो पर्सनली मेरा गोल था वो अभी 2023 में ही था। तो पूरा राजकोट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव के साथ जुड़े सब लोग का मैं आपको प्रदान करता हूं और नाबार्ड की तरफ से पूरी सहायता मिली है। चाहे सीबीएस की बात है, बिजनेस डेवलपमेंट की बात है, ट्रेनिंग की बात है, तो पूरा नाबार्ड से हमें सहयोग मिला है। नाबार्ड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक सीबीएस प्लेटफॉर्म में नहीं आ सकती है, मेरा दावा है। तो नाबार्ड ने बहुत काम किया, इसके लिए मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, बैंक लोन एंड इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो की मैं बात कर रहा हूँ तो टोटल लोन बैंक की 5900 इसमें ऑफ विच केसीसी लोन 3486 हमारा केसीसी लोन है, उसका शेयर 58% है। अभी जो हम बिजनेस डायवर्सिफिकेशन की जो बात कर रहे हैं तो केसीसी के अलावा जो हमारा बिजनेस है वो टर्म लोन है, कैश क्रेडिट है, गोल्ड, सभी मिला के 2497 का हमारा का शेयर 42% है। और केसीसी का जो लोन पोर्टफोलियो है वो सबसे ज्यादा गुजरात में हमारा 3500 करोड़ के करीबन केसीसी का पोर्टफोलियो है। इन्वेस्टमेंट की जो बात करें तो एसएलआर इन्वेस्टमेंट हमारा 1600 करोड़ है और बैंक पीडी 1900 करोड़ एंड 56 है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बैंक का ऑल इन्वेस्टमेंट है जो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में है, स्टेट कोऑपरेटिव में है और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में है। हमारे यहाँ वोरा साहब भी बैठे हैं, ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक में भी रखते हैं। और इसके आगे मैं बात करूं बैंक डिपॉजिट और फंड की बात रहा हूं तो सबसे बड़ी बात है कि बैंक का 8360 करोड़ डिपॉजिट है। इसमें सेविंग डिपॉजिट 4900 करोड़ है, करंट डिपॉजिट 2096 करोड़ है एंड फिक्स डिपॉजिट 3001 करोड़ है। तो हमारी कासा डिपॉजिट का रेशियो है 62.20% है, वो सबसे हमने बड़ा ए किया है। तो इसके हिसाब से बैंक का प्रॉफिट पोर्टफोलियो भी अच्छा रहता है। और शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, रिजर्व फंड 1404 करोड़ है, ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट ईयर 2023 में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 197 करोड़ था। ये 2020 टारगेट है 225 करोड़ का हम प्रॉफिट करने वाले हैं। मैं आगे से पोर्टफोलियो बता सकता हूँ। और नेट प्रॉफिट हम इनकम टैक्स के हिसाब से हमने 81 करोड़ रखा था। रेशियो एनालिसिस की बात करें कि जो बैंक का जो हार्ट है उसका जो रेशियो कैसा आदर्श रेशियो के नजदीक होना चाहिए तो ग्रोस हमारा जो रिकवरी जो रेशियो है 99.25 एंड एबव, लास्ट 30 ईयर से बैंक का रिकवरी 99 एंड ग्रोस एनपीए 1.30% है, नेट एनपीए 0 है, करार है 10.57 क्योंकि करार सीआरआर थोड़ा कम है क्योंकि लोन पोर्टफोलियो हमारा बड़ा है इसलिए। सीडी रेशियो 66% है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 4.11% है, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट 1.68 है और एवरेज वर्किंग फंड अबव 10,000 करोड़ है और एवरेज बिजनेस पर ब्रांच 72 करोड़ है, एवरेज बिजनेस पर एम्प्लॉई 13 करोड़ है। ऑल ब्रांचेज इन प्रॉफिट एंड ऑल हम जो ब्रांच की जो स्टाफ की सेटअप बीच में बोलता करता है कि जो कोई भी ब्रांच है इसमें डिपॉजिट कितनी है और लोन कितनी है, पैक्स कितनी है, लॉकर फैसिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से और हर पर दिन उनका एवरेज स्टाफ अलाउ ब्रांच में कर ले, कोई ब्रांच का भी नहीं रहता है। और अभी जो हम बात करें बिजनेस डायवर्सिफिकेशन की बात, जो आज का मेन सब्जेक्ट है, इसके बारे में बताऊं तो केसीसी लोन हम सब लोग करते हैं। तो मुझे आपको बताना ये भी खुशी हो रही कि पूरे इंडिया के जीडीपी में 70% जो हिस्सा है वो
एग्रीकल्चर का है जीडीपी में। और हमें कल देखा एक स्लाइड में, तो पूरा कोऑपरेटिव का जो शेयर है वो 11% है। वो बात अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। तो पूरा हमारा शेयर, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में हमारा शेयर कोऑपरेटिव सेक्टर का होना चाहिए, क्योंकि जीडीपी में 70% है। तो हम, हमारे साथ भी किसान जुड़े हैं और रूरल एरिया भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो रेशियो, उसका जो शेयर बढ़ाना चाहिए। तो केसीसी लोन दो टाइप की दे रहे हैं, क्रॉप लोन दे रहे हैं और एनिमल हस्बेंड्री भी लोन दे रहे हैं। केसीसी होल्डर हमारे साथ 2,25,974 केसीसी होल्डर है और उसका हम 3,400 को केसीसी दे रखा है। केसीसी एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो 7,000 करीबन केसीसी होल्डर है और 102 करोड़ का हमने एनिमल हस्बेंड्री का लोन केसीसी दिया है। और बिजनेस डायरेक्शन में आगे चले तो मीडियम टर्म लोन जो एग्रीकल्चर की वो हम दे रहे हैं, जो हमारा 42% जो शेयर है मीडियम टर्म का। तो इसमें माइनर इरिगेशन, फार्म मैकेनाइजेशन, एनिमल हस्बेंड्री, गोडाउन लोन और अदर लोन दे रहे हैं। आप स्लाइड में देख रहे हैं, काफी नाम बोलने की जरूरत नहीं, आप सब लोग भी दे रहे हैं। तो ये दूसरा मीडियम टर्म का लोन का पोर्टफोलियो है। और बिजनेस डायरेक्शन आगे मीडियम टर्म नॉन फार्म सेक्टर की भी हम लोन दे रहे हैं। इसमें मीडियम टर्म लोन में हम हाउसिंग लोन दे रहे हैं, हायर एजुकेशन भी लोन दे रहे हैं, कंज्यूमर लोन, कार लोन और एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए दे रहे हैं और कंज्यूमर लोन दे रहे हैं। और कैश क्रेडिट में हम सीसी ऑन सैलरी एम्प्लॉइज के दे रहे हैं और नॉमिनल पर्सनल लोन एंड रिवॉल्विंग सीसी में दे रहे हैं। अदर लोन, गोल्ड लोन सबसे बड़ा हमारा 335 करोड़ का गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो, गोल्ड लोन भी दे रहे हैं। और एग्रीकल्चर इसमें 2 पार्ट्स है, बुलेट सिस्टम के हिसाब से 2 लाख और सीसी। और माइक्रो फाइनेंस के लिए एसएसजी, हमारी बैंक के साथ 6,000 एसएसजी जुड़े हैं। और आगे नॉन इंटरेस्ट इनकम जो बैंक अदर बिजनेस जो कर रही है, वो जनरल इंश्योरेंस का भी काम कर रहे हैं, इफकोटोक के साथ हमारा टाइप है। और गवर्नमेंट जो स्कीम है, पीएमजेजेवाई, पीएमएसबीवाई, पान कार्ड, पीएम एफबीवाई और एपीआई के काम बैंक कर रही है। और दस में पान कार्ड और ई स्टैंपिंग का भी काम कर रही है। और साथ में बैंक गारंटी, जो पैक्स को बैंक गारंटी हम दे रहे हैं कि जो खाद का जो उसको सीजन में ऑफ सीजन में स्टॉक करना है, तो काफी सीजन में उसको घाटा ना पड़े, अच्छत ना हो जाए, इसलिए हम एग्रीकल्चर पैक्स सोसाइटी को बैंक गारंटी रासायनिक खाद के लिए दे रहे हैं। और बैंक की जो स्पेशल स्कीम है, तो इसके बारे में बताऊं तो सबसे बड़ा जो हमारा जो गोल है वो बैंक की स्पेशल लोन स्कीम का है। वो एक शायद ये भी कहता हूं कि जो सफलता की ओर चले, ऐसा हमारा जो लोन की नई स्कीम है, जो उसका पार्ट 1,500 करोड़ लोन का है। तो फार्म मेंटेनेंस के लिए हम लोन दे रहे हैं। तो पर मेंबर की लिमिट 12 लाख से, और उसका जो रिपेइंग कैपेसिटी बोलते हैं, यूनिट कॉस्ट बोलते हैं, तो वो पर एकड़ 60,000 है। दूसरा लोन का स्कीम अभी इस एजीएम में हमने डिक्लेयर किया, कृषि तत्काल लोन, जो 5 लाख की लोन है और पर एकड़ 50,000 हम दे रहे हैं। वो तत्काल लोन है, वो ओनली फॉर 3D में हम किसान अपने अकाउंट में लोन जमा कर दे, इससे हमने ये अरेंजमेंट किया है। तो कृषि तत्काल लोन है। फार्म इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस लोन भी हम दे रहे हैं मेंबर्स को, वो 3,000 के हिसाब से हम रिपेइंग कैपेसिटी रखते हैं। हमने ये भी देखा कि काफी लोग ऐसे हैं कि जो उसका जो हेल्थ के लिए कुछ प्रॉब्लम हो गया था एक्सपेंस के हिसाब से, तो हमने एकदम रिजनेबल ओनली फॉर कासा डिपॉजिट का जो रेट है, सेविंग डिपॉजिट का रेट है, उसी रेट में हम 5 लाख तक मेडिकल के लिए लोन हमने दे रखी है। उसकी लिमिट 5 लाख है और 80,000 पर एकड़ उसका रिपेइंग कैपेसिटी है। गोल्ड लोन हम 2 लाख तक दे रहे हैं और गोल्ड लोन कैश क्रेडिट 5 लाख तक दे रहे हैं। और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, किसी को एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के लिए दे रहे, वो सभी जो अभी स्लाइड में आप देख रहे हैं, उसका हमारा बैंक का लोन का पोर्टफोलियो मीडियम टर्म का 1,500 करोड़ है। तो सबसे ज्यादा बैंक ने ये लोन में हमको रिस्पॉन्स मिला है। काफी गुजरात के नदी वाली हमारी जो डीसीपी हमारी लोन का पोर्टफोलियो देख के, डॉक्यूमेंट देख के हमने उसने भी हेल्प की है कि आप भी लोन ये शुरू कर सकते हैं। और बैंक शेयरिंग ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशनल एरिया, सबसे अभी पहले बताई कि एग्रीकल्चर में हमारा जो शेयर दिन प्रतिदिन घट जा रहा है, तो इसके बारे में राजकोट डीसीसी भी है। उसके साथ नंबर ऑफ किसान 2,25,000, हमारा जो एग्रीकल्चर लोन में पूरा राजकोट में अदर बैंक काम करे, इसमें हमारा जो शेयर है 52% है। और अदर नेशनलाइज और प्राइवेट बैंक है उसका 48%
शेयर है। टोटल 4,37,000 करोड़ मेंबर में हमारा 52% है। और हर पर ईयर हम 5,000 7,000 नए किसान हमारी बैंक में अभी भी आ रहे हैं नेशनल और प्राइवेट बैंक से। किसान और सभी लोग को हमारे तरफ जोड़ने के लिए, हमारे साथ लाने का आले के जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास की मैं बात कर रहा हूं। तो इनोवेशन कन्वीनियंट बैंकिंग, कस्टमर रिलेशनशिप एंड डेप्थ रिच रूरल एरिया और टेक्नोलॉजी की और मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले कन्वीनियंट बैंक की बात कर रहा हूं। तो सेफ डिपॉजिट वर्ल्ड लॉकर फैसिलिटी 24/7 आवर्स एंड 365 डे हमारे हेड ऑफिस में हमने रखा है। वहाँ कंटिन्यूसली 24 आवर्स कोई भी पर्व है, कोई त्योहार है, कभी भी उसका लॉक हुआ नहीं है। और पूरा सेलर में गाड़ी जाके पास आप जा सकते हैं। और इसमें मिरर भी रखे हैं कि शायद किसी को कोई मैरिज में फंक्शन में जाए तो वहां उतना ऑर्नामेंट पहन के पूरा रेडी होके बाहर जाते हैं और बाद में फंक्शन वो अपने लॉकर में रखते हैं। तो ऐसी हमने 24 आवर्स बांध की। मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में कभी आज की डेट पे शायद ये 24 आवर्स वाली मेरे ध्यान में नहीं है कभी कोई लॉकर फैसिलिटी वाला बैंक है। और अदर 2 ब्रांच ऐसी है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है। तो उसमें हमने सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक 2 ब्रांच और भी हमारी लॉकर फैसिलिटी वाली है। और टोटल 200 ब्रांच में से 105 ब्रांच में लॉकर फैसिलिटी हमने प्रदान कर रही है। तो इसके क्या हुआ कि लॉकर फैसिलिटी तो उसका जो एक स्पेशल अकाउंट बनता है, उसमें डिपॉजिट रखनी पड़ती है। और लॉकर के लिए अदर्स बैंक से हमारे साथ ग्राहक भी काफी लोग आए, इसलिए डिपॉजिट में भी हमारा अच्छा बेनिफिट मिला है। कन्वीनियंट बैंक की आगे बात करें तो गोल्ड लोन फैसिलिटी है। तो 200 ब्रांच में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक तो हम गोल्ड लोन दे रहे हैं। लेकिन हेड ऑफिस में हमने एक गोल्ड लोन एक्सटेंशन काउंटर खोला है। वो शाम 3 बजे से रात को 10 बजे तक उसको गोल्ड लोन मिल सकता है। तो काफी जॉब करने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन लोग, हेड ऑफिस में जो कतार लगी है वो गोल्ड लोन लेने की, और एक ही एक्सटेंशन काउंटर 3 बंदे काम कर रहे हैं ओनली। तो हमारा 31 करोड़ का काफी 2 करोड़ के से ज्यादा एक ब्रांच एक्शन काउंटर प्रॉफिट रही है। बैंक एट योर डोर स्टेप, बैंक आपके द्वार। 2 साल पहले मैंने प्रोग्राम दिया था बैंक में कि बैंक अपने द्वार। तो पूरे 2 डिस्ट्रिक्ट में हर गांव में, सोसाइटी के बिल्डिंग में, समाज के बिल्डिंग में, या कोई अच्छा सा मंदिर में बैठ के हमने बैंक आपके द्वार एक प्रोग्राम दिया था। और 40,000 एक न्यू अकाउंट हमने खोले थे। तो हमने ये टारगेट बनाया कि कोई भी एज ए 18 साल से ऊपर वाली व्यक्ति है तो उसका बैंक में, हमारी बैंक में अकाउंट नहीं होना नहीं चाहिए। तो पूरे सर्वे करके पूरे का अकाउंट, उसमें हमारे करीबन 1,000 करोड़ से ज्यादा हमें डिपॉजिट मिली थी। और बैंक का दूसरा एक प्रोग्राम दिया स्टूडेंट अकाउंट बैंक स्कूल के द्वार। मैं एक सत्य घटना बता रहा हूँ कि एक दिन हमारे बैंक में सिक्योरिटी के पास एक बहन जी और पुअर लोग थे, और एक भैया और एक उसका बच्चा सिक्योरिटी में पूछ के आया कि भाई साहब को मिलना है। तो सीधा मेरे चेंबर में आ गया। तो बोला मैं कि आपको बताया क्या काम, तो मेरे अकाउंट खोलना है। कोई बात नहीं। तो मैं ऐसा नहीं सोचा कि मैं सीईओ तो मेरे अकाउंट खोलने के पास मेरे पास क्यों आना। मैंने उसको बिठाया, चाय पानी पिया, उसको पूछा कि आपको मेरे पास आने क्यों पड़ा, कि आप यहाँ तक पहुंच गए। तो उसने बोला कि मैं 3-4 बैंक गया तो किसी ने मेरे अकाउंट नहीं खोला। कोई बात नहीं, उसका अकाउंट्स मैनेजर को बुला के अकाउंट खोल दिया। और वही सेम डे 4 बजे मैंने मैनेजर्स मीटिंग बुलाई और बोला कि गवर्नमेंट स्कूल जो है, जो गरीब बच्चे को अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, तो पूरी राजकोट में गवर्नमेंट स्कूल में हमने प्रोग्राम रखा और 12,000 अकाउंट ओनली फॉर 2 मंथ में हमने ओपन किया। वो काम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काम के। इसके हिसाब से मेरा तो वो उन लोगों का काम हो गया शिष्यवृत्ति और स्कॉलरशिप के हिसाब से। तो इन लोगों से मुझे डिपॉजिट भी मिली और छोटी छोटी लोन और माइक्रो फाइनेंस भी उन लोगों से मिला। और टोटल ब्रांच है, इसमें हमने ऐसा काम बनाए थे। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हैं, जो सहकार के जो 7 सिद्धांत है, इसमें एक सिद्धांत है सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके हिसाब से हमने 2 लाख इंश्योरेंस कवर ऑफ द 10 लाख, जो केसीसी होल्डर है हमारे, जो पैक के फाइनेंस केसीसी ले रहे हो, 2 लाख मेंबर्स का हमने 10 लाख का एक्सीडेंट पॉलिसी ले रखी और पूरा प्रीमियम बैंक उसके साथ पे करती है। से उसके नाम पे हमने मेडिकल सहाय योजना शुरू की है। तो कोई प्रोवाइडिंग द मेडिकल असिस्टेंस द केसीसी होल्डर अप टू 15,000
मेजर डिसीज लाइक टू कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, किडनी, ऐसा कोई जो कुछ प्रॉब्लम हो जाता तो नॉन रिफंडेबल 15,000 सहाय दे रहे हैं। और किसान गेस्ट हाउस, बैंक की 9 स्टोरी की बिल्डिंग है, उसमें 6 फ्लोर पे हमने किसान गेस्ट हाउस रखा है। 60 बेड का उसका कैपेसिटी है। ओनली फॉर 10 रुपीज में हम किसान गेस्ट हाउस प्रोवाइड करते हैं और विथ लॉकर फैसिलिटी के साथ। तो ये सभी के साथ मैं ये बता रहा हूँ कि बिजनेस डायवर्सिफिकेशन उसके हिसाब से, उस माध्यम से हम किसान बता रहे हैं कि ये फैसिलिटी हमारे पास यहाँ है और कोई बैंक में नहीं है, तो वो भी बिजनेस में हमके पूरा असर करता है। रिलेशनशिप विथ बैंकिंग, बैंक हैज डेवलप हेल्दी रिलेशनशिप विथ फार्मर बाय प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर। बैंक ने 4 एमएससी की निमणूक की है। वो पूरे गांव में खेत पे जाके किसान को मार्गदर्शित करता है कि आपको कौन सी पेस्टिसाइड लगानी है, क्या खाद लगाना है। तो वो आप जो देख रहे हैं वो उपला वाला पहले जो कॉटन वाला पिग है वो मेरा फार्म का, मैं आई एम द सन ऑफ द फार्मर, वो मेरा फादर का पिग है, वो भी ऑलरेडी डूइंग नाउ इज फार्मिंग। एंड वो जो खेती का जो बैल का है वो मैं पहले मेरा पूरा फार्म के, अभी भी मैं खुद ही फार्मिंग कर रहा हूँ। कस्टमर रिलेशनशिप की जो आगे बात कर रहे हैं तो फार्मर्स मीटिंग हम रखते हैं हर ब्लॉक में। हर साल एक ब्लॉक में एक पूरा सेमिनार रखते हैं, पाक शिविर रखते हैं और रेगुलरली इसमें हम इफको और फिपको भी इनवाइट कर रहे हैं। तो काफी लोग ये मीटिंग में आ रहे हैं। तो बैंक की अलग जो लोन की योजना है, डिपॉजिट की योजना है, कोऑपरेटिव सेक्टर का जो अभी नया माहौल है, वो सब बात करके कस्टमर को हमारे साथ जुड़ने का भी हमें काम कर रहे हैं। वो शिविर में शायद प्राइवेट बैंक में, अदर्स बैंक में है तो भी शिविर में हम इन्वाइट करते हैं और उसको बताया कि ये बैंक में फाइनेंस लेने का क्या क्या फायदा है। कस्टमर रिलेशनशिप में आगे बात करते हैं तो पैक्स एंकरेजमेंट की हमारी अच्छी स्कीम है। वो स्कीम के मुताबिक हम बैंक है जो इंट्रोडक्ट द मोटर बाइक प्राइज विनर स्कीम टू पैक्स फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द लोन रिकवरी मैनेजमेंट कॉस्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सोसाइटी अच्छा काम कर रही है, मीडियम टर्म का काम कर रही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, मैनेजमेंट कॉस्ट कम है, तो उसका 3 ग्रुप हमने बनाए हैं। 1 करोड़ से 6 करोड़ तक, 6 करोड़ से 15 करोड़ तक और 15 करोड़ से ज्यादा जो केसेस अंदर 3 ग्रुप में 1 2 3 नंबर प्राइज देते हैं। वो हमारे एजीएम और बड़ा फंक्शन है, उसमें हीरो होंडा हम गिफ्ट और इसका इनाम देते हैं और एक शील्ड भी देते हैं। और अभी तक हमने 204 पैक्स को इस तरह से हीरो होंडा देकर हमने एंकरेज किया है। बैंक एनुअल जनरल मीटिंग, जो बैंक की जो हमारी एजीएम रहती है, अभी लास्ट हमारी एजीएम 24 सितंबर को हुई थी। तो उस दिन हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब आने वाले थे, लेकिन वो ऑनलाइन बैंक को एजीएम में प्रेजेंट थे। और इस जो एजीएम में राजकोट के जो 6 डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो इंस्टीट्यूट है साथ में मिला के हम एजीएम करते हैं। करीबन 20,000 लोग उस मीटिंग में प्रेजेंट रहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हम प्रमुख श्री है जिसने 20 हम सम्मानित करके उसको पाग पहना के 25,000 का चेक देके और शील्ड देके हमको उनका सम्मान करें। तो आप देख रहे हैं हमारे चेयरमैन स्पीच दे रहे, हमारे सीजीएम साहब सिंगल साहब भी है, उस आए थे तो उसका भी हमने स्वागत किया। और जो एक चेयरमैन का स्वागत हो रहा है, जो सभी पाग वाले लोग हैं वो हमारे चेयरमैन है सोसाइटी के पैक्स के। और ये एजीएम 2022 का पीक है और इतनी बड़ी संख्या में रहते हो। और इस साल का जो है वो भूपेंद्र साहब हम भाई पटेल जी ने जो स्पीच दिया था और पूरा ये इस साल का हमारा एजीएम का पीक है। और इन इनोवेटिव में जो बात कर रहे हैं तो इन डेप्थ रीच इन रूरल एरिया, तो बैंक की 199 ब्रांचेज है। ये ब्रांच में रूरल में 142 रूरल में ब्रांचेज है, पैक्स 462 है और लाइव कैसेस होल्डर 2,25,000 से ज्यादा है। और डिपॉजिट अकाउंट हमारे पास जो कस्टमर है ये 8,38,000 में 8,38,000 साथ हमारे साथ ग्राहक जुड़े हैं। टेक्निकल एडवांस की बात तो अभी कल भी हो गई। तो सभी सीबीएस में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आ गई है, सभी काम एटीएम, माइक्रो एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग का काम कर रही है। और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो ज्यादा ग्राहक लाने के लिए जो हमने स्ट्रेटेजी जो अपनाई है, इसके बारे में पहले भी आगे यहाँ कि जो हम पैक्स को एंकरेज करते हैं, 1 पैक्स 1 सेक्रेटरी। पूरा डिस्ट्रिक्ट में कोई भी पैक्स, एक सेक्रेटरी पास 2 पैक्स नहीं है, ओन बिल्डिंग है, ओन ऑफिस है, ओन गोडाउन है और ओनली पैक्स वाइज सेक्रेटरी है। और एंकरेज ऑफ द पैक्स का भी हम काम कर रहे हैं। डिविडेंड लास्ट करीबन 10 साल से ज्यादा समय से हम 15% हम डिविडेंड दे रहे हैं और मेंबर्स को भी गिफ्ट दे रहे हैं।
इंटरेस्ट मार्जिन जो केसीसी लोन है 1.25 to 1.5 का मार्जिन केसीसी लोन में दे रहे हैं, और मीडियम टर्म में जो पैक्स को हम 1.5 का मार्जिन दे रहे हैं. ऑल पैक्स आर कंप्यूटराइज एंड प्रॉफिट मेकिंग पैक्स. रेगुलर ट्रेनिंग पैक्स सेक्रेटरीज एंड बीडीपी मीटिंग इन द ब्रांच मैनेजर पैक्स. मैं भी पूरे ब्लॉक में बीडीपी मीटिंग में जा रहा हूँ, तो बीडीपी मीटिंग में पैक्स के सेक्रेटरी ब्रांच मैनेजर फाइंड डाउन करिएगा प्लीज. श्योर, एक मिनट. ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात है. जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ पैक्स जो कोऑपरेशन का चला उसमें भी अच्छा काम किया है. पैक्स टू एमएससी मल्टी सर्विस में जो बैंक की जो फर्टिलाइजर का काम कर रही है, वो पेट्रोल पंप अभी काफी पैक्स के पास है. फार्म इम्प्लीमेंटेशन है, सेल ऑफ जो आरओ वाटर है, और पीडीएस के भी काम कर रही है. पतंजलि स्टोर है, फ्लोर मिल है. और अवार्ड्स अचीवमेंट बैंक को भी डेकेट अवार्ड मिला था अमित भाई साहब के हस्तक से, और नाफ्स को भी काफी अवार्ड मिले हैं. ये अवार्ड के लिस्ट है. और छोटी 1-2 मिनट में सर लूंगा कि सीक्रेट सक्सेस होने का जो सीक्रेट है वो है कि मेन पिलर्स बैंक जो पैक्स के जो मेंबर है बहुत अच्छे हैं. बैंक के पास के ही लोन ले रहे हैं और समय से टाइम टू टाइम लोन भर रहे हैं. पैक्स जो बिजनेस कर रही है उसके पास से ही वो रियलाइजेशन परचेज और वो कर रहे हैं. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पैक्स के वो अच्छे हैं, और उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हमेशा किसान को कैसे फायदा कर सकते हैं वही सोचा है. और बैंक और पैक्स के जो स्टाफ है वो एकदम डीओटी और ऑनरेबल स्टाफ है, और पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं. और बैंक ये नहीं लेता, शॉर्ट में बोलता हूँ तो रिकवरी जो 92.5 है, तो उसमें पैक्स का भी बड़ा रोल है, स्टाफ का भी बड़ा रोल है. और एक बात ये बताऊँ कि जो बिजनेस जो ज्यादा करना है कोई भी बैंक को एक्सरसाइज की, इसके हिसाब में बताऊँ तो हमारा जो स्टाफ है उसको पहले से पहला हमको मालिक बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा स्टाफ को 58 ईयर સુધી उसमें सैलरी लेना है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या चेंज हो रहे हैं, तो जो स्टाफ बैंक का जो मालिक के हिसाब से काम करेगा, अपनी ओपन शॉप के हिसाब काम करेगा, बिजनेस के हिसाब काम करेगा, तो बिजनेस हो सकता है. वो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन भी करना जरूरी है. हमारा जो स्टाफ का एटीट्यूड है वो भी अभी सुधरने का टाइम आ गया, क्योंकि पहले हमारे यहाँ किसान आते थे, बड़े बड़े उम्र वाले लोग आते थे. अभी उसके साथ उसका बच्चा आता है तो डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर. तो हमारा स्टाफ का एटीट्यूड और सर्विस का भी सुधार लाना जरूरी है. और हमारी बैंक है वो बैंक है, मेरी बैंक है, उसका एटमोस्फियर करना वो जरूरी है. और हर लोगों के साथ रिलेशन रखना जरूरी है. हम भी एजीएम में जाते हैं, शिविर में जाते के हस्तधन करते हैं, क्योंकि वो पहचान है, वो समझ है, उसके हिसाब से हमारा कस्टमर बेल्ट बधा है. और टारगेट भी नक्की करना चाहिए कि मेरे अपना ही टारगेट होना चाहिए, बाद में बैंक का टारगेट होना चाहिए. और ब्रांच में को टारगेट देने के बाद उसका एवरी 3 मंथ फॉलोअप भी लेना चाहिए, तो बिजनेस 100% बढ़ता है. और ग्रास रूट लेवल की लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, वो वैसी ही स्कीम जो हम बैंक में रखते हैं तो 100% सफल हो जाती है. बैंक के हिसाब से योजना नहीं बनाई, ग्राहक की कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है जो हम ऐसी बनाए. और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं. और देश का जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का रोल 75 है और हमारा जो 11 है, तो मेरा आपको सबके निवेदन है, और मैं भी मेरे से शुरुआत करूंगा कि हमारा जो कोऑपरेटिव जो शेयर है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े. और इस कार्यक्रम के हमको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसका ऑन बिहाफ ऑफ फार्मर्स ऑफ कोऑपरेटिव मेंबर्स, वी आर वेरी थैंकफुल टू नाबार्ड board and continue support and encouragement the agriculture, rural and cooperative sector. Thank you so much. Wish you all the best. God bless you. Thank you. थैंक यू सांख्य साहब. आई थिंक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन रही. कुछ हाइलाइट्स इसके जो हैं आपने देखे कि इनका जो शेयर है अदर देन केसीसी इज 42%. दैट इज एक्सट्रीमली very good development. CASA deposits at 62%. I think even the diversification in terms of medium term loans is excellent. And one striking feature is the fee based income that they are doing. I think in terms of lockers, in terms of PAN, Aadhaar cards, etc., bank guarantees, I think excellent. And the icing on the cake is that 52% is the GLC in his area, where he's even beating the commercial banks. So that is excellent. Thank you, sir, for an excellent presentation. Taking the session forward, may I invite my good friend, Mr. Sharif Saab, to make his presentation. Thank you.
Respected CGMs of NABARD, Director Bird, Joint Director Bird faculty, and other staff members of Bird, senior officers and MDs of Apex Banks, DCCB CEOs, PACS secretaries, and CEOs from PACS. Good morning to all of you. At the outset, I thank Bird, IDD NABARD for giving me this opportunity. I was transferred from Bird to my home state, Telangana, and joined the Telangana NABARD regional office in 2017. Then I was looking after DOR. Apart from DOR, other departments were there. So I had an opportunity to analyze the data of business of all the banks. I was on the board of Telangana Gramina Bank and also conducted some inspections. So during that time, the business, the state was new, and banks were also new. They were bifurcated, and also some of the banks were merged. So we were analyzing the data just to have, just to see our refinance and all that, and how the performance of banks is there. So during that period in 2018-19, we analyzed the data of cooperative credit structure, entire credit structure. So what we found was the continuously from 2014-15 onwards, continuously the share of already we heard a lot of things about share of cooperative sector in the GLC. So in Telangana also the same situation. The GLC the share of cooperatives was continuously decreasing. It was 2014-15 it was 17%, and 2018-19 it decreased to almost 7%, 8%. So then we thought why this is happening and how to increase business of cooperatives. Then we analyzed the entire data. So in my presentation also, the analysis part will be there. Then also little on problems. All you all know the problems of cooperative credit structure. Then what are the causes and what are the effects and what needs to be done. That we actually in 18-19 and 19-20 we did this work, and also we conducted a lot district wise in DCCs. DCCBs we conducted strategy meets to enhance business. So that was the actually it was the background, and with that background in 2020 after my retirement the TESCAB asked me to join TESCAB. So as a resource person, already they had a BDPIC cell. They call it as a business development and product innovation cell. So I joined there. I retired in July, and 1 month I took break, and September I joined. So after that, then the BDPIC, NABARD BDPIC was established in 2021. So from BDPIC TESCAP, I was heading the BDPIC cell of NABARD. So in BDPIC, what we do, because the Telangana TESCAP, yesterday you have seen the presentation made by CGM. So I'll not talk about the as TESCAP business, but business development or business diversification, what we did in Telangana, that my presentation will be focusing on that. So the analysis part, I will go directly. So if we see 2-3 DCCBs, I am just showing you. In 2016-17, the Adilabad DCCB, the share was 16%, and 2018-19, it has come down to 8%. Then similarly, the Best Bank of Telangana, Karimnagar DCCB, the share was 30%. It subsequently it reduced to 17 and 23% in 18-19. And then Khammam, it was a kind of moderate type of bank. Then the share of Khammam DCCB was in 16-17, it was 24%. Then it has decreased to 12%. And at the state level, all DCCBs, all cooperative credit structure put together, initially it was 12% in 2016-17, and it has come down to 7% in 2019-20. So continuously, almost 50% decrease was there. And not only in terms of share, we analyzed the exact amounts also in terms of total business.
That was also in terms of amount also, the total amount in the priority sector was decreasing. So if you can see that 6,285 crores in 16-18, and more or less it was same in the 1920 also. So there was not much change in the absolute terms, and share was continuously decreasing. Then the problems all you know, but only few points which we analyzed was one of the major, because I did inspection of TESCAB also in 18-19, I think. Then one of the major area we found was the appraisal skills of the staff. For major projects, like if they want to give some kind of guidance to DCCBs on poultry sector or dairy sector, big projects, the appraisal skills were lacking. And also in the even in the loaning of TESCAB also, whatever appraisal notes we saw, so slightly it was, they were not in full scale appraisal was not there. Then LT share, of course, LTRCF was there. Even then, the LT share was continuously, it was not increasing, maybe more or less same, but it was not increasing. And a lot of dependence on short term. Short term, actually, it gives negative returns to banks, because DCCBs claim the interest subvention very late. Almost it takes 1.5 hours when they get interest subvention. So they invest and then they get back the money after 1.5 years. So some of the banks, actually, they were saying that it is a kind of negative margin for them. Then policies and products also very new. CASA deposits, very low level of CASA deposits. And then another thing is there was no a dedicated cell or dedicated department which will exclusively work on business development. So these were the issues. Then business diversification, not only we thought that for business development, business diversification is it has to be done. So some of the banks, actually, now they are doing very well. A lot of business, Karimnagar DCCB, Medak is there, then Mahbub Nagar, Warangal. So now they are slowly diversifying their portfolios, and also the share of their direct business is increasing. That is a kind of good sign. Direct business from DCCBs, earlier it used to be 80% refinance and 20% direct from their own funds, but now it is slowly it is increasing and decreasing the dependability on refinance. And BDPIC was why we wanted to diversify. Basically, the lot of members, they were shifting away from these cooperative banks. Reason was, one of the reason which we analyzed was the IMBP, that is individual maximum borrowing limit, which was fixed by DCCBs, was 1 lakh, 1.5 lakh, like that. So when we conducted this strategy meets, we told them specifically that at least this IMBP you increase to bring it to at least interest subvention level, that is 3 lakh. So some of the banks, they did, and continuously they are doing, and almost some banks now 2.5 to 3 lakh, some of the DCCBs increase the IMBP. Then second is a lot of, in Telangana and Andhra, you know that lot of SHGs are there. So DCCBs were not financing SHGs. We told them how they can finance SHGs, because under SHGs also the long-term loans can be given for dairy or some kind of other MSME sector. So our NFS activities also can be given. So there we thought wherever agriculture portfolio is there, that you can claim under LTRCF. So that way slowly they started, and now it's a good portfolio in DCCBs. Then why diversification? Mainly to increase business, increased margins, and increase profit. So with that mindset, we started our journey. Then and also we just thought which are the areas where we can diversify, or how to enhance this business of cooperatives. So one of the very good thing which is happening in Telangana is a lot of investments have happened in irrigation sector. Because of irrigation, lot of areas come under cultivation, and a lot of production is happening in Telangana. So irrigation sector, if you see, it was 27% of cultivated area. It has increased to 52%.
And earlier before bifurcation or before state formation, lot of dependence was on groundwater. Now it has shifted to, earlier it was 70% groundwater and 30% surface water, canal water. Now it is 15% groundwater and 61% is surface water. Lot of irrigation projects are there. That has resulted into increased area under cultivation. So gross cultivated area has increased substantially from 59 lakh hectares to it has gone to 85 lakh hectares. So huge increase. And then production also, crop production also increased. So that is one area we felt when area has come under cultivation, so it will give opportunity for crop loans, and also it will give opportunity for because production is more, so processing units can be set up. So like that. Then some of the areas NABARD supported schemes are there, where watersheds and WADI concessional rate of interest is available. Then area development schemes, NABARD has circulated area development schemes, and in each district, which are the potential areas, that also was identified. And a lot of farmers collectives, almost 1,000, including PACs, 1,000 farmers collectives, more than 1,000 farmers collectives are there. So we thought these are the areas where we can bring some kind of diversification, and the new products can be brought, thought of. So, and also we, some of the schemes of Government of India, very attractive schemes, AIF, Agriculture Infrastructure Fund, then Prime Minister's Pradhan Mantri formalization of this scheme, where 35% subsidy is available, and cooperatives 3 crore subsidy. That is the maximum limit for cooperatives. So it's a huge support is there under that scheme. Then NLM, SAM, then focus on PACs, these areas. Then Telangana government also, for particularly for processing units, a lot of support Telangana government is giving. That is IPAS. That is this industrial projects self-certification system, where for processing units, we need not go to state government and apply. First, you establish your own processing unit, and then you can apply. So self-certification scheme is there, and that is also again supported. Industrial development, entrepreneurship assistance is there. There, a lot of incentives government is giving, Telangana government is giving. For example, if somebody wants to have land, 50% cost will be given by government. Then the registration is free. Electric connection is 50%. Again, benefit is there. Again, in electric, what you call consumption, also they are giving per unit 2 rupees incentive. Then 5 years income tax benefit is there. Income tax, tax exemption is there. So that these 2 schemes also, they promote a lot of processing, because production is coming. A lot of production is happening in Telangana, farm produce. So this scheme was brought in by the government. Then when we started discussions on BDPAC, this NABARD BDPAC, then we told, TESCAP actually, when we want to do business, it's definitely it is required that a dedicated structure is needed. A dedicated structure means who will a particular cell, and also kind of deployment of human resources to focus on this particular business diversification and also business development. So in Telangana, the Telangana TESCAP, in the cell itself, they have posted 3 people, AGM and also manager and 1 staff assistant. Then from Telangana, they posted nodal officers to DCCBs, the business development officers. They were posted in DCCBs, and supporting again cells, legal cell for legal scrutiny, and also valuation cell, mortgage to the evaluation is required. So that is available at the TESCAP level and also at the DCCB level. So this kind of setup was there, and also we requested DCCBs to have a dedicated staff for business diversification exclusively at the DCCB level. Officers were identified, and with a dedicated team. PDC is there. PDC was involved in the entire work, this diversification work, and also wherever this PDCs were not, development cells were not there, the DCCBs placed a dedicated staff cell in the. So that entire team was working towards including us. It was working on the business diversification and how to do it, what to do, and how to do. So all these things were in the entire
in the chain it was being done. Then, we also suggested some kind of structure to carry on this entire business in future also. What we contemplated is this still discovery not done, but discussions are there on this. From MD, when we presented this entire policy, they said it's okay. So what we are contemplating is this middle level officers, AGM level, they can identify some. The Telangana has some 42 and some 3 or 4 new branches are there. Total 47 branches or 48 branches are there in Telangana metros. We said you allocate some 5 to 6 branches to each nodal officer, and then this nodal officer also will have 1 DCCB and also 5 packs. So our main basic this thing was objective was to develop some kind of skills in these some 8 to 10 people. What is happening in particularly in Telangana, what we see is the test cab level officers, particularly the new officers and those who are promoted as managers or senior managers or AGMs, they don't know what is happening at PAX level. PAX level, ground level situation, they don't know. So we want this at least some AGM level officers, they should have, it should be a knowledge group who can guide in future to these DCCBs and also PAX. So similarly, at PAX level also similar, the DCCB level also similar structure we contemplated. So this is a kind of suggestion which we have given to TESCAP. Then this business diversification, we have identified some potential areas. That is one is PAX, because PAX MSc scheme was there. So PAX, then increasing loans and advances under agriculture sector and allied sectors. That was another potential area we thought of. Then financing in watershed and Wadi project areas where a lot of farmers producer companies have come up. Then similarly in this area, in this particularly watershed and Wadi, NABARD also was giving concessional rate of interest. Then retail loans and processing and SME loans, increasing CASA deposits, increasing investments, increasing non-fund business, insurance and all those products. So these are the areas we thought it needs some kind of focus. So based on that, again, when we come to PAX, these are the areas: PAX infrastructure, agro processing, agro service centers, then input outlets, because they have land kind of. So PAX as MSc, lot of work we did under this. Then the Government of India initiatives recently, which started last 2 years, that they're also focusing. Then agriculture and agriculture sectors, these are the areas we identified. Some of the areas which were not being done by DCCVs at the ground level. So those areas we just identified. Yeah, farm machinery, this is a area, and also Government of Telangana is offering subsidy, and also national level subsidy is also available under this. So this particular scheme also, under this also farm machinery also a kind of focus area we identified. Then allied sectors, small dairies and poultry farms and all these things we identified. Dairy sector also is a very happening sector in Telangana. Then poultry, entire Telangana and Andhra, lot of poultry investments are happening. So these areas we identified as a potential areas. Then under on each product, what we did is because appraisal and also the documentation part was lacking. So what we did is PAX, if you see this, madam, connect MSc, click करें. Because PAX as MSc, if you see PAX as MSc, which needs to be submitted to NABARD, the another format under AIF we can get 3% interest subvention. So another format, similar format, but there are some changes. Then again, it is a warehouse, then our processing unit, then we have to submit a template or format to AMI to claim processing unit subsidy. We have to submit different types of formats are there. What we did is we linked the formats. One format, if you fill up, it gets linked, and also it gives repayment schedule. It also gives the economics schedule of that particular project. So what if it is a go down scheme, or initially some two documents they are essentially they have to submit. One is resolution of the board,
and also their audit reports, 3 years audit reports. Those are essential for all type of project proposals. Then if it is a warehouse scheme, that is they have to give these are the, so checklist type of thing we have given. And then packs. Okay. Yeah. So click career. So like that we linked the entire thing. And last economics also last one we click career. And we also design given cost specific and entire thing. So it go because these things are not possible at the PAX level, and also DCCVs can try. But from our side, we developed this kind of templates and circulated to DCCV. So they have to fill up only some 17 columns, then 17 rows, and remaining thing, entire thing, it automatically it generates. So this kind of thing we did. Then financing in watersheds policy and all those prepared for each of the products. These are the different products. Rural housing. These products were not available, so we developed this Tatkal overdraft facility. Then multi-purpose loan against property. This is means maybe if home loan and in these families, they may require some kind of multi-purpose loan, means ACs and also some kind of furniture. So all these things combined can be given to as a loan. So this is another product we developed. Next. Next. ऐसा यहाँ से हो जाएगा. Okay. Then this is the kind of convergence model we did for processing units. See, so many schemes are there. It's a 35% subsidy coming from government, interest subvention. Marketing also we just, how it should be done, that also we have done. Then, one scheme particularly, it clicked very well. That is this Karshak Mitra multi-purpose loans. Actually, when a farmer comes to DCCB, he wants a loan for land development. He also wants loan for fencing. He also wants loan for maybe pump set or a small house, farmhouse. So all these things, because generally what was happening, if he's coming for pump set we were giving. So combined, integrated farming system type, if someone wants pump set and also dairy animals, so that like that integration can be done. So that kind of product we developed, and it is doing very well. So rent plus and own your shop, because we are giving housing loans, but we are not giving shops. Many people want to construct some small mulgis. So for that also loans can be given. Rural transportation, new vehicles and also old vehicles can be given, and SME loans. So these are the different products we did. And finally the outcome of this entire thing, the space created is 103 metric tons under warehouses. And also we finance some of the cold storages in under PAX's MSC and AIF subsidy, and also AMI subsidy. So like that convergence happened, and subsidy is also released in some of these warehouses. And then established 8 wholesale markets, 135 storage come agri units, so these outlets for selling inputs. Then 9 custom hiring centers we established, 15 agro processing centers, 47 other activities like weighing based, small other activities are there. Then another good, because of NABARD scheme, the PACs and also DCCBs, they approach government. Government allocated land to these, wherever land was not available to PACs, 60 acres of total land, and it is worth 56 crores of worth. And they wanted to have some agriculture platform where the PACs can have access to inputs, and also they can have access to markets for selling their produce. Finally, this is the financial outcome. Watershed and Wadi projects, PAX's MSC 126 crores, more also, ground level it is more. And Karshak Mitra, this integrated farm system loans, 397 crores disbursed last 2 years. Then working capital, this is OFPO on handlooms, 75 lakhs disbursed. Then loan to MSME under co-lending arrangement. We have come out with a policy of co-lending because of CMA
category bank, then 60 lakhs. If it is B lakhs, if it is CRD, it is 25 lakhs. To overcome this problem, some of the projects we are doing in kind of co-lending. So TESCAP cannot go to DC districts, so we have DCCBs. Generally they give working capital, and TESCAP gives term loan. So term loan up to 60 lakhs, TESCAP can give. Another, if it is a class a DCCB, then 60 lakhs will come from DCCB. So 1.2 crores. So slightly bigger projects, big ticket projects, we can encourage. With that intention, we brought this co-lending arrangement. So there also we did, and a few more schemes we are getting. So total in the last 2 years, we have disbursed, in the new initiatives, we disbursed 543 crores. So that is the outcome of this entire BDPIC. So these are some of the units. Yes. Thank you all. Again, a very interesting present. I think a few points that stand out is that before we exercise, it's very important to do a proper analysis. I think the problem tree analysis that he showed was very, very important before we embark on this exercise. It's very important. Few things that came out was also lack of project appraisal skills and risk aversion that he found. In fact, it's surprising that as CGM Refinance, when I talk to some of my ROs and ask them why is the LTRCF, a product like LTRCF also, why it's not being exhausted by the cooperative banks, the standard, some of them actually tell me that there are no assets, or there's no GLC for term loan. So even for such a concessional finance, sometimes we don't find offtake of it. A few other things that stand out as government schemes, I think that is the low hanging fruit for all of you to start, whether it's AIF, AMIH, IDF, or PMFME. We can make a beginning with these things. So taking this session forward, I know there's so many ideas that my panelists want to share, but there is no time, unfortunately. So hopefully, if I can, request our CGM IDD that these are some of the great stuff happening in BDPIC cells and all. If you can compile it and share it with everybody, I think a lot of ideas they can be real cross learning. That would be a good idea to share it with other DCCBs. Taking the session forward, yeah, I could now request Mr. Manta Saab, MD of HPSTCB, to kindly make his presentation. Actually, I forgot to tell one thing. Whatever products we developed from policy guidelines, then application to sanction letter. So entire documentation part is there. Appraisal, if they go preliminary scrutiny, what kind of the document or format. So all the formats are there from one to end, from beginning to end. From guidelines, specifically if it is a, for example, own your shop, what is the guideline, then application form, then appraisal, then final appraisal. So like that entire field visit document, how it should be. So all the documents are there at one place. So these booklets also we developed. So that is also there. Good morning to all. Shri Vivek Sinha sir, CGM, Department of Refinance. Shri Nirupam Malhotra ji, Director Bird. Madam Shefali Agrawal ji, Joint Director Bird, and very senior officers of NABARD, and my dear colleagues from different STCBs, DCCBs, and PACs. It's an honor for me to be here with you, discussing a few of the recent initiatives on business diversification by HP State Cooperative Bank. So to start with, like we have already discussed the journey of the cooperative banks, which started as for the cooperative societies to get freedom from the money lenders and finance the small borrowers and credit toward agriculture sector. We had a lot of discussion on the financial sector reforms, in which we see the Narasimhan Committee recommendations, in which the banking sector was diversified, and there were many reforms in financial system reforms, regulatory and supervisory measures, and structural changes in the banking. But
Majority of the business diversification in the cooperative bank were concentrated to house loan and personal kind of loans. And this issue has already been discussed. If you see the share of the cooperative banks in the agribusiness, it has decreased from 16% in 2015-16 to 13% in 2021-22. It is a 2% dip in the RRBs, but an increase of 5% in the commercial banks. So which, like it is clear, the core area of cooperative banks is very aggressively taken, and it is a great cause of concern for all of us. There is a competition of larger banks, an issue of increasing sustainability, meeting diverse borrower needs, and reducing risk. They're expanding our revenue streams. That's why there is a need of diversification by the cooperative banks. And discussing about the strategies for diversification, the first is self-discovery. We'll have to look on our strength people because they are the owner of our banks, and they have a sense of belongingness with the cooperative banks. And of course, secondly, it's an issue of technology acquisition of new customers. One by one, like in self-discovery, we can have on the local. Yes, we have the local staff, unlike from Tamil Nadu can be posted in Himachal. And but our staff is local and they use local languages, and we have a strong linkages. We have a rural connect, customer trust. I'll not discuss much on. I'll come to, because we do not have so much time, and we'll definitely come to the main initiative. And upgradation, I'll not discuss more. And this is the case study of Himachal District Cooperative Bank. And this is our latest customer base. We have a total customer base, account base of 16 lakhs. But you can say the majority of our customer base, like 50.5% of our customer base is above 60 years of age. Means majority of the farmers and the people and who are involved in the agriculture, they are our customers. And if you see our young customer, it was around 11.2% who are up to 18 years of age. So this prompted us to go for diversification, because we can well imagine what can happen in the next 5 to 10 years. This above 60 years of people with above 60 years of age can reach up to 70%, and which will definitely be very disastrous for our bank. In acquisition, in banking system, we all know it is very difficult to retain the customer. Forget about onboarding new customers. The banking is so competitive, and the aggressive posturing of the private banks, it prompted us to catch the customers young. We can have many opportunities of term relationship if we catch the young customer, tech savvy and digital adaptation, innovation, etc. And we can, in business diversification, we have different avenues like business loans, CC limits, CRERH, renewable energy sector, consortium loans, insurance business, MSME loans, government sponsor schemes, self-employment, and corporate loans. And our bank tried to capture all these areas. This is about our corporate loaning. We are the biggest lender of our boards and corporation, which are government boards and corporation. We can see we have, which is a central sector PSU, a company having a yearly profit of more than 2,000 crore. And all these loans are given through competitive bidding. It's not that government is having any blessing on us to give these loans to the cooperative bank. It's the competitive bidding, because all these boards and corporations, they invite competitive bidding for loaning. And after, if we see the case, we have just almost each and every board and corporation of our government, and we are having majority of share in these. And these loans are all against no default government guarantee. If there is no guarantee, then it is against 100% collateral. Our safest area, none of these board and corporations have defaulted so far. And since we have also financed a Government of India Mini Ratna company, it is for any cooperative bank.
And we are also doing consortium loans. We know we have also participated in FCIs. My only suggestion is the government must identify some areas and government sponsor schemes may finance these loans through a consortium mode and involve CVs, DCCBs, and PACs, where we can lend lakhs of crores to the government of India. This is a new area where we should go for diversification. And obviously, there was a discussion on bank insurance. We are doing bank insurance, and we are earning handsome amount, and there is no business. Obviously, tax SDMA we are doing, and last year there was a transaction of 102 crore through our DMA, and they're doing great business. This is a different scheme. Like there is a cement company in the district of Himachal, and the cement company is in contract with the society for providing transport vehicles, and bank is financing the societies. And this is a very unique and this is not even a single NPA. We are financing multi-axle trucks, not through the individual, but through the society. It's a unique kind of arrangement with company and society. And this is a new scheme we have launched last year. It is a loan against salary for work emoluments. Like we have different kinds of we cannot say government servants like ASHA worker, Anganwadi worker, parafitter, pump operator, water courier in a school. There must be thousands in each and every state, but they are not government employees, they are honorarium based employees. And no bank is giving finance to them. We launched a special scheme for these people, and there was a 23 crore in 1.5 years. This is getting very good response. Since it's a loan against salary, we will transfer their salary or honorarium account in our bank. And last year, when we financed them crore, against the 10 crore, 4 crore CASA was there in their account. So this is another advantage of such scheme, because when we transfer their salary, definitely it is seen the people in the bottom of the pyramid of society, they have that sense of saving their money. This is a scheme like for development, purchase and development of agriculture. It is the same scheme as if I have seen in the case of Rajkot. They also have a scheme for purchase of agriculture land, because no public sector banks will have a scheme for purchase. They will have a scheme for purchase of land and house and building initiative. It's a unique initiative. Like we have launched the scheme. It is a collateral-free, guarantee-free scheme for women. All they can come with one application and KYC Aadhaar, and we will immediately disburse 21,000 as first dose. It's hardly 431 rupees. And if she continuously gives her 12 EMIs, we'll increase that limit to 51,000. If she will again repay next 12 EMIs without any default, will increase the same to 1 lakh. Now, what is the beauty of this scheme? The beauty of this scheme is within 5 days, we onboarded 3,000 women. And we have a target of 25,000 women this year, because women can take this loan for any bona fide purpose. She can take any machine, anything, and purchase jewelry or anything she wants to do. There is no need to get any guarantee or something written from her husband also. What you are doing, but only one condition is there. She'll have to open account of one of her child with us. So we are also onboarding the young customer in our bank. And when we have already disbursed 6 crore in those 3,000 accounts. And this year we have a target of 25,000. In that manner, we will have accounts of 50,000, like 25,000 women and 25,000 young customers in our bank. And we will disburse 55 crore. And automatically that amount will be increased with the second dose to 125 crore next year. And by the next to next year, we will have a loan of 250 crore with only these 25,000 women. So this is being highly appreciated. Even there was since we are working in a hybrid model in our state, we are STCB as well as DCC is not getting benefit of this scheme. So we are trying to increase our footprints with such schemes. And another scheme we have launched is Sapno Ka Sanchay.
it is for the students. What you're planning with scheme, we will open some piggy bank type of account in our like in the name of a student who is in early like in teens, and parent can deposit any amount. It is a flexi like 10, 50, 100 rupee, and with every birthday anniversary we will convert it into FD, and we are trying to give differential interest rate. And after 18 years we will give 4 times education loan, and this amount will work as a 25% collect security. So it is for the people who are at the bottom of the pyramid, like lower middle class and poor people who have a dream make it like get his child admitted in good institution or get good education. And in the same manner, we will have young customers onboarded in our bank. What are the challenges as hurdles? Obviously, NPA can be a hurdle in agriculture sector, and marketing problem definitely, competition from larger banks, and stricter norms for credit guarantee like in CGTMSC, cooperative banks, it is less than 5% NPA, whereas for all the other banks, it is less than 5%. And technological gap, definitely, when you are into like government sponsored schemes, you need to have a single nodal account where majority of the government deposit has already slipped out of the cooperative banks to the commercial banks, particularly the private banks. Then for DBT, we need to have all kind of technological digital transaction systems. We need to have a robust PFMS facility and digital banking. So we cannot do diversification unless we are technologically upgraded for the new generation and new initiatives of Government of India. There is working on it, like we can have an ecosystem at the west and rural level where we can link PACs with the SSG and the SSG and the government. PACs can finance the SSG, and SSG, the produced SSG can be purchased by the government for the schemes such as PDS, midday meal, or Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. Because what is happening right now, if there is a demand of food grain in Himachal, we are getting it from Punjab. Firstly, we are sending it from Punjab to Punjab. The local products can be introduced in the government like food initiatives like midday meal scheme. Work on this. Much of the state cooperative bank this year with the assistance of NAB, we have launched a new academy. It is Academy for Agri Entrepreneurship Development for Growth and Empowerment. It is the FPO Academy. Since we see where we should go, and this academy will not only give training, this academy will do consultancy, DPR preparation, and everything. Because now there is a focus from SSG to FPOs. We want to catch, and I think NABARD training for the FPO faculties, and we are sending our faculty from our bank, and with the assistance of NABARD, we will go for FPO training. We have already getting response from the government department, particularly horticulture and agriculture, which have made many FPOs, and they are telling us to start the training of the FPO people. So with this business diversification, there was a discussion on AgriShare. If we speak about the statistics of my bank, our KCC, short-term agriculture share in our total lend just 18%. I think it must be lowest in the country bank because we have diversified our business, and we are the third largest bank of the state, only after SBI and PNB. And sponsor schemes, and in technology 70,000, and we are sure by December this year our UPI per day UPI will definitely cross 1 lakh. Sir, we are the biggest like bank for PFMS, like all the government sponsor schemes, even Manrega, etc. The highest number of PFMS transactions are done through our bank, and this is what about HP State Cooperative Bank, sir, and its latest. Thank you so much, Manta Saab. Again, a very, very interesting presentation, and it presents before us so many possibilities. I think one important thing that stood out for me was his KYC, Know Your Customer.
So it's not only about, anti-money laundering. It's actually also about knowing your customer, the demographics of your customer, so that you can design, marketing strategies and acquisition strategies for your customers. Very, very important from marketing perspective. Catch them young, another great, idea, so that you can keep your customers for long. Talked about corporate loaning again. It's great to have a mix of both corporate, both wholesale and retail banking is important. And also the another a very exciting thing that I noticed was the FPO Academy. With so much focus on FPOs, it's great that you're showing your focus on this. So thank you so much. We've now moved to the last presentation. I think it's only about, I think we're going to extend the session, I guess, for a bit because we're almost out of time. But may I request Sarkar Saab, additional RCS and CEO of Hooghly DCCB, to make his presentation. Our bank is a district level bank in West Bengal. The name of the bank is Hooghly DCCB. And Hooghly DCCB is renowned in India for its potato production, both in terms of yield and productivity, production and productivity. The district is first among India. So I will start my presentation with some data. Then we will focus on diversification, especially in agri journey in the year. Then we are into banking from that time, and for the last 46 years, this bank is continuously in profit. We have 17 blocks and 12 municipalities and 21 branches we have. Number of member societies is around 1100. PAX is 374 and Employees Credit Cooperative Societies is 384. Our member societies, that is our borrower societies, is restricted almost to these kind of societies. There are few engineers cooperative, weavers cooperative, and some other cooperatives too, but PAX and CCS because of their endeavor, number, and their activities. Our deposit is almost 2,000 crore, and our lending is 1355 crore. CD ratio is %. Total working capital of the bank is 3,300 crore. Collection percentage of the bank is around 87%, though collection percentage of KCC and SHG is above 90%. Net profit of the bank in the last year was 27 crore. Gross NPA has just increased this year. Through the year,
in up to the gross NPA was below this area. Net NPA is 0. Net worth of the bank is 184 crore. CRAR is 17% and audit rating is A. This is the sector-wise loan outstanding. 61% of the total loan, that is 800 crore, is in KCC. Almost 300 crore is in. We have in our district 33,000 self-help groups, and the loan outstanding is almost 300 crore. Allied sector, employees credit cooperative loan, house building loan, cash credit loan, all other production kind of loan is also available in the bank. During the last 5 years, the total loan outstanding has jumped from 892 crore to 1354 crore. Now, what we have done in our district for some 6-7 years back, there's almost no diversification in agriculture sector. Now the agriculture sector, and of course in allied activities too. Now, at that time, we planned our journey in this way, that we combined our traditional modern improved kind of planning. First, the planning was that we were focused on that and lending through PACs and lending through APU and FPCs. We have our PACs conference, monthly PACs conference in all blocks under the branches, and their PACs gave them margin and told that you bring your member to the branches, we will make the appraisal, give them the loan through your PACs. So you will get some margin and the bank will be able to give loan for diversification. And one thing we did that we have a Jila Parishad in Hooghly district also. ADM Jila Parishad, we approached him that you please help us to coordinate with agriculture, horticulture, animal husbandry, and fishery departments of the state government in the district, so that we can be the district level banker of all these state departments in the district. There, he then convened a meeting of all PACs personnel in presence of all these departmental heads in the district. He published a book with our help. In that book, all schemes, that is all subsidy linked schemes were there. We made one leaflet, and in that leaflet, 2 pages leaflet, all schemes, all interest rates, flat interest rates was there at that time, 10%. PACs will get 1% interest, and in our scheme, flat, that is cash security, was restricted to 15% only. Own contribution was 10%, and rest was loan. And in you know that
almost all government departments in agri-allied sector gives subsidy from 25% to 10% to the borrower. So gradually, after that grand meeting, we banker of all these districts. We participated in flagship schemes of the state government like student credit card scheme in Bengal also. We have so far financed agriculture infrastructure fund for packs. 35 packs have come to us, and 13 crores of loan we have been able to give them for structure in agri and agri-allied activities. These are the departments: NABARD, district level horticulture office, agriculture office, LDM, and Hooghly Jela Parishad. We have a collaboration with all these government departments and LDM and DDM. Now, custom hiring center and AIF, horticulture schemes for poly houses and onion storages, schemes for DDS and NLM. Actually, when DDS and NLM schemes came for 3 years, we could upload 350 cases of DDS scheme in the NABARD portal and got 30% of subsidy from there. And for NLS schemes, some schemes were through the packs and rest were directly, and almost 400 individual borrower got loan and subsidy from our bank. We have a working experience with international NGO called CLASP. CLASP is an international NGO based in Washington, DC. This target was to convert all the because you see, we have almost 1,800 electric pumps in the packs. Packs are doing a great business and giving that service to the farmers in the irrigation sector. So we plan rising day by day, and all other are also rising. So can we make some one-time investment, get 50% subsidy the international NGO and put this portal to give 3% interest subvention on the loan? So we encourage the packs and the do something for the farmers and the packs. First came was operating on 19 electric pumps. We have to convert them in solar pumps and subsidy, and their projects will be uploaded in the AIF portal to get 3% interest subvention. Then the scheme will be in a
bigger area covering some 7 and 200 electric. So we were very skeptic from the beginning that the government departments give us, and we were almost sure to get it. But if something is happen to international NGO, then where shall I go? They first we insisted that all this 50% subsidy would have to be an account with our bank, and after this scheme completes, the subsidy will be given to the banks only. So advised in this way, and started our journey. Example, solar pump set is doing very well in rural areas where there is disruption in electricity, and electric bills is rising day by day. I have already told. This is our diversified lending at a glance. DDS scheme, NLM, poultry, piggery, polyhouses, onion storages, goatary. These dakari and goatary are not covered in NLM schemes. Fishery, solar pump sets, custom hiring center. In the last 3 years, we have given almost 6 crore of project cost, and the loan was 3 crore, subsidy was 20 crore almost, and the number of cases was 100. Now, networking, I've already told about that we met the PACs in the monthly conference, encourage them to bring the farmer to the door, help us to give them the loan according to their need. And we met all district departments, and one interesting thing when the DDS and NLM scheme were in operation, that all the block stock officers, beginning of the year, met with our branch managers in the district headquarters. All the branch managers, all the BLDOs and deputy husbandry, with them we held a meeting. They prepared the project and we gave them the loan. Actually, for all government departments, that is, who are in agri, selected the farm, going to the villages and to the PAXes, and small meeting with the farmers, and then from there we selected the would-be borrowers and get them filled the subsidy application and to the agriculture department, horticulture department, fishery department, and animal husbandry. So the farmer knew that if we go to the DCCB branch, we will get loan and subsidy from one window.
So we got the support of all government departments, and a calendar was prepared at the beginning of the year that from these branches we will do this much of loan to the farmer, and the number and Sarkar amount Sahab, was just 2 more minutes. oh, okay. Now I am showing you some interesting projects of the house. That is, in DDS, 11 farmers got 10 cows, and that 11 farmers decided to bring their 101 cows under a shed, and they are doing everything there, selling the milk, cow dung, etc., and sharing the. That is a unique joint cooperative like thing. Poultry loans of 10,000 birds for layer birds. Project cost loans and here. Dakari loan for vegetables and Jarbera flowers. Solar pump sets through FPC. Custom hiring center through FPC. Mini rice mill borrower. And these are, in brief, our best practices that I have already told. Here, summed up. Thank you. Thank you, Sarkar Sahab. So we've heard from 4 different corners by 4 very innovative banks telling us how it's possible to do business diversification. Unfortunately, completely run out of time, but like I'd promised in the beginning, I'll give you 5 minutes for any questions. That's all I have time left for. 5 minutes if anybody has any questions from my panelists before we wind off the session, please. Okay. नमस्कार। जो मांटा साहब ने बताया कि सपनों का संचय एक ए लोन, और दूसरा बताया वो सशक्त महिला ऋण योजना, और दोनों योजना में आपका कितना फीडबैक, क्या बेनिफिट मिला है, कितना लोग को फ्री हुआ है, वो क्या हुआ है, जरा बताइए एक्चुअली। सर, ये जो दोनों स्कीम्स है, मैंने आपको कहा था कि दे आर आवर रिसेंट इनिशिएटिव्स। जो सशक्त महिला है, हार्डली अभी इसमें 1 मंथ हुआ है और हम करीब 30 to 100 वुमेन को इसमें ऑन बोर्ड कर चुके हैं, और हमारा जो टारगेट है इस बार वो 25,000 वुमेन को इसमें ऑन बोर्ड करना है। एंड डेफिनेटली हमने हर ब्रांच को जो है मोर देन 100 केसेस का एक टारगेट दिया है, एंड विल अचीव। और जो सपनों का संचय है, इसे तो लॉन्च किए अभी हार्डली 1 वीक हुआ है, तो इसमें मैं डेफिनेटली इन द नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस आई कैन कम विद द एनालिसिस कि स्कीम का हुआ क्या। बट आई एम श्योर कि जितने लोगों से मैं कंसल्टेशन करता हूँ, आई ट्राई टू कंसल्ट मैनी पीपल, सभी बड़े पॉजिटिव है ऐसी स्कीम को लेके, क्योंकि ये स्कीम जो है, जो सोसाइटी में हमारे काफ़ी गरीब लोग हैं, डेफिनेटली उनको, जिनको अपने बच्चे पढ़ाने होते हैं, क्योंकि अभी एजुकेशन इतनी सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये उनके लिए आई है, तो डेफिनेटली विल गेट ए गुड रिस्पॉन्स। बहुत बढ़िया है, आपको धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि जो आपने बच्चों के लिए जो रिकरिंग टाइप जो एफडी और बाद में जो 4 टाइम जो लोन दे रहे हैं एजुकेशन के लिए, बहुत बढ़िया बात। राइट, आई थिंक और कोई सवाल लगता है नहीं है किसी के मन में, तो वील वाइंड अप द सेशन जस्ट बाय सेइंग द फ्यू वर्ड्स दैट नाउ इज द टाइम। एक्चुअली सहकार से समृद्धि का टाइम है। सर मैं आई सर,
Yes, please. Sir, I am DM from Punjab. I am DM Sangrur Central Cooperative Bank. Sir, one thing I want to ask from Rajkot Bank. They have 199 branches and almost 11 people in each branch. What is your HR policy, sir? I have in 24 years of my service, I have always uh, uh, observed that we are always short of staff. Maximum to maximum, we have 2 to 3 persons per branch in Punjab. For each and every bank, we have 22 DCCBs in over there. So I want to know about the HR policy of your bank. You have 199 branches and about 2200 of staff members. राइट That's the only thing I जी want. सर, Thank you. एचआर पॉलिसी के बारे में तो जो पहले मित्रा कमेटी की गाइडलाइन थी, अभी अवल प्रभुनाथन की गाइडलाइन के हिसाब से हम एचआर मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जो आप ब्रांच में और 1100 स्टाफ है इंक्लूडिंग सबऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के साथ, तो पहले तो हम ये फिक्स करते हैं कि कौन सी ब्रांच में कितना बिजनेस की पोटेंशियलिटी है, और दूसरी बात यह है कि पोटेंशियलिटी के बाद एक ब्रांच में कितनी डिपॉजिट है, कितनी लोन है, कितनी पैक्स है, कितनी लॉकर फैसिलिटी है, और पर दिन एवरीडे एवरेज वाउचर कितना है कैश वाला, वो ट्रांसफर वाउचर की बात मैं नहीं कर रहा। इसके हिसाब से हमने एक सेटअप बनाया है कि इस ब्रांच की कितनी रिक्वायरमेंट स्टाफ की है, वो ब्रांच की रिक्वायरमेंट स्टाफ की है, ब्रांच मैनेजर है, अकाउंटेंट है, क्लरिकल है, और एवरेज 12 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस है पर एम्प्लॉय, तो हम एक ब्रांच एक स्टाफ प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी ब्रांच में ऐसा नहीं है कि एवरेज ब्रांच, इंडिविजुअल ब्रांच में भी एवरेज बिजनेस 10,000 से कम है, लेकिन बिजनेस की पोटेंशियलिटी है। सिटी में ब्रांच है, ब्लॉक लेवल पे ब्रांच है, प्रॉपर राजकोट सिटी में ब्रांच में, वहाँ 10-10 12-12 लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस Sir, के हिसाब if I can request you, we have a whole session on HR following this. So I think HR की aspects you can. Which authority is the recruitment authority over there, sir? नहीं, नहीं समझा नहीं, प्लीज बताएं। मतलब भर्ती कैसे कर रहे हैं आप स्टाफ? हाँ, आप रिक्रूटमेंट की जो ऑल प्रोग्राम की गाइडलाइन है उसके हिसाब से एजेंसी नियुक्त करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, और पहले से स्टाफ सेटअप बना रहे हैं, कितना स्टाफ है, कितनी रिक्वायरमेंट है, और कौन सी कैटेगरी वाला, आईटी वाला, कॉमर्स वाला, बिजनेस मार्केटिंग वाला, वो पहले से ऑफिस नोट के पहले मेकम बना के बाद वो एक एजेंसी को काम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दे रहे हैं। क्लेरिकल की पोस्ट में ओनली फॉर मेरिट के हिसाब से हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। ऑफिसर में पर्सनल इंटरव्यू है, ऐसा कुछ मार्क्स वो रखते हैं, लेकिन क्लरिकल में मेरिट। हेलो, मैं सर चरण सिंह, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक उधम सिंह नगर उत्तराखंड से। एक मिनट साहब, एक सवाल पहले हो रहा है, 2 मिनट दीजिए। I'm asking about your recovery, and you have told that recovery is 99% and gross NPA is 0%. How it is possible? What is about recovery process? यस Please tell यस, it. आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जो रिकवरी की पहली बात करते हैं तो जो पूरी पैक्स का सेक्रेटरी है और हमारा ब्रांच मैनेजर की लाइसेंस में रहने के बाद हम फाइनेंस करें, पहले से ही रिपेइंग कैपेसिटी और सिक्योरिटी बाबत में हम कोई भी बांध छोड़ नहीं कर रहे हैं, वो पहले देख के फाइनेंस कर रहे हैं। दूसरी बात कि ओवरड्यू होने से कितना गैरलाभ उसको बेनिफिट उसका जा रहा है, कितना नुकसान, और वो हम समझाते हैं। हर ब्लॉक में फेब्रुआरी जेएफएम जनवरी फरवरी मार्च में मैं ही पर्सनली ब्लॉक में जाते बीडीपी मीटिंग करता हूँ, तो कितने ओवरड्यू है पर ब्रांच में, कौन कौन लोग ओवरड्यू है ब्रांच में, नेम लिस्ट वाइज मैं दिखता हूँ, और ब्रांच को और पैक्स को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इस किसान को आप आके समझाओ। आप 0% का इंटरेस्ट में केसीसी दे रहे हैं, गुजरात में तो 4% गुजरात सरकार दे रही है, 3% हो नेशनल लेवल पे आ रहा है, तो वो उसका 0% जाने वाला है ओवरड्यू होने के बाद, तो वो हम उसको समझा के वो उसकी रिकवरी ले रहे हैं पहले। दूसरी बात है कि जो फ्रॉड का रेशियो कम है, पूरी लोन हम एसबी अकाउंट में डाल रहे हैं, बाद में उसको पेमेंट करते हैं, फाइनेंस भी एसबी अकाउंट की वजह से हो रहा है। दूसरा रिकवरी एसबी अकाउंट से हम ले रहे हैं, कोई कैश रिकवरी पे नहीं कर सके पैक्स में, क्योंकि फ्रॉड का रेशियो कम हो जाता है। दूसरी बात है कि जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है पूरा अंडर फाइनेंस नहीं कर रहे हैं,
जो दे सकते तो पूरा फाइनेंस दे देते। तो सोसाइटी, बैंक स्टाफ और बैंक का बोर्ड और बैंक का जो सोसाइटी का जो कमिटी मेंबर है, सबका इन्वॉल्वमेंट है और पूरी निष्ठा से लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात आपने कासा डिपॉजिट की बताई, तो मैंने बताया कि 2 प्रोग्राम दिए थे कि बैंक अपने द्वारा जो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं वो पहले तो अपना अकाउंट एसबी अकाउंट में रखते हैं। दूसरी बात, हम केसीसी लोन दे रहे हैं तो भी उसके एसबी अकाउंट में जा रहा है। मीडियम टर्म लोन दे रहे हैं तो पहले भी एसबी अकाउंट में, शायद मैंने फार्म मेंटेनेंस के लिए 12 लाख किसी किसान को दिया, तो एक दिन में वो यूटिलाइज करने वाला नहीं है। पहले एसबी अकाउंट में जाता है, बाद में थोड़ा थोड़ा करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेते हैं। तो क्या होता है कि अपना जो व्यवहार है वो पूरा बैंक के साथ जुड़ा हुआ है और कोई ऐसा किसान नहीं है कि जो हमारे पास अकाउंट नहीं है। शायद कोई भी बैंक में लोन रहे, कि हमारे पास तो क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा है, रूरल एरिया में ब्रांच है, तो पूरा सर्विस हम दे रहे हैं और किसान को ऐसा लगे कि ये हमारी बैंक है। ऐसा जो एटमॉस्फेयर हमने क्रिएट किया है, इसके हिसाब से कासा डिपॉजिट ज्यादा और रिकवरी भी अच्छी तरह से हो रही। 453 पैक्स। Yes, last question please. Yes, we are completely out of time. बस last question एक आप मिनट का बताइए। क्वेश्चन हाँ है जी मेरा। बिल्कुल। जो जीएम सर ने बताया कि स्टाफ की व्यवस्था ये वर्किंग के हिसाब से करते हैं, मैं मानता हूँ ये आपने पेपरों में तो ठीक है, आपके कहने में भी ठीक है, परंतु कोऑपरेटिव बैंकों में ये धरातल पे आप कैसे मेंटेन करते हैं, बस इतना बता दीजिए। आपने बहुत बड़ी, जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारा चेयरमैन है मिस्टर जयेश भाई रादिया, वो एक्चुअल वो एमएलए है और मिनिस्टर भी है। तो बैंक के जो रूटीन जो कामकाज है उसमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अभी आज मैं आपको उसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के 3 दिन पहले मैंने 162 ब्रांच मैनेजर की ट्रांसफर की। एक कॉल अभी आया नहीं है किसी का, क्योंकि वो 3 साल में हम ब्रांच मैनेजर को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्लरिकल को 5 साल में। मैं सच में बताऊं कि 162 ब्रांच में ट्रांसफर की, किसी डायरेक्टर साहब का, चेयरमैन साहब का और कोई स्टाफ का भी अभी फोन नहीं आया मुझे। और ऑर्डर कैंसिल नहीं होने वाला है। हमारी बैंक में कोई ट्रांसफर हुई तो ऑर्डर 110% कैंसिल नहीं होता है। तो ब्रांच की हिसाब से ही स्टाफ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। आई थिंक कंप्लीटली समय खत्म हो गया है, तो मैं इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूं with a big thanks to all my fellow panelists. Thank you so much. We had a wonderful panel discussion on best practices on business diversification. We learned a lot from the systems followed in different banks. An important announcement for PAX members. Reimbursement on your travel will be available at the travel desk, which is outside. So if anybody has not taken the reimbursement, we request you to approach the travel desk. From IDD and Bird side, we have small mementos as a token of our love and appreciation, requesting our director, Dr. Nirupam Mehrotra, to kindly come on stage. Our first memento is for our CGM, Shri Vivek Sinha from NABARD head office. Other mementos for our other panelists. We now have a short break for tea. Request all our guests to kindly reassemble at 12 o'clock for the next round of discussions. Ultra beats on the track.
Ultra beats on the track. Ultra beats on the track.
Ultra beats on the track. Ultra beats on the
Ultra beats on the track. Ultra beats on the track. Kindly take your seats. We are about to begin. Welcome back for the next round of panel discussions. It is often said that you can have the best strategy and the best building in the world. But if you don't have the hearts and minds of the people who work for you, none of it comes to life. Our panel discussion now deals with just that, human resources. Chairing the panel will be our CGM from HRMD NABARD head office, Sri Nilay Kapoor. Adding further value to the panel will be Sri Mandar Manohar Vartak, CEO, Raigad DCCB, and Dr. R. Srinath Reddy, MD, Andhra State Cooperative Bank. Request the dignitaries to kindly come on stage. Over to you, sir. Good afternoon, everyone. I guess after the tea break, it is always difficult to reassemble people, but now it seems I think almost everyone is back. And without wasting time, I'll straight away request the MD of Raigad CCB, Mr. Vartak, to share his experiences, particularly with reference to the HR practices which have been followed by his bank and his own thoughts on the subject. The pattern which I will be following for this session will be Mr. Vartak's session will be followed by
that of Mr. Reddy, my old friend and colleague from NABARD, now of course the MD of AppCorp, and thereafter I will be sharing my thoughts on the subject. After which, if time permits, we will have a Q&A here itself. Else we will have the Q&A outside, offline during the lunch hour. I hope and believe this will be all right with everyone. Mr. Vartak, over to you, please. Good morning, good afternoon, everyone. CEO of Raigad DCCB, a bank based in Maharashtra. So, first of all, we are thankful to respected CGM of NABARD, all GM and other staff of NABARD, and other my colleagues from State Cooperative Bank, District Central Cooperative Banks, and PACs. I'm really thankful to all of you to giving us an opportunity to just be present here and share our thoughts. First of all, the subject given to me is an HR. But since last 17 years, I'm working in a bank. The main subject, how our bank is functioning, and I'll start afterwards towards HR. But at the start, I will like to introduce our bank with you all, because many of the people he start as which are assembled here must be aware about our bank. In India, we have launched India's first RuPay KCC and in the year 2013. On 18 May 2013, we launched that card by the hands of then Chairman of NABARD, Honorable Sri Bakshi sir. Then consecutively on the next year on, in the year 2014, we again did a other pioneer project. We launched India's first ATM mobile van. After that, we are dealing about this HR. I would like to mention just even before many years earlier, when after that, then recommendation came into committees like Vaidyanath and all. In the year 1997, we started amalgamation of packs. Earlier, we were having 477 packs, then which was amalgamated it to 173, and now the current number is 126. But while reducing this number, we also taken care that all the farmers, all the beneficiaries of those packs should get extra added benefit, and again the packs are to the profits. After that, and I would like to mention here one more thing what we're doing today. It is mainly because of the support of NABARD, and which is always behind us, because their continuous follow-up and everything. We have just again recently launched that PAX computerization project, which is also we are live in. And again, we are the different thing what we are doing is, other than this regular banking, we have formed more than 20,000 SHG groups without any help doing this all things. Of our bank, we have just reached to 5,000 crores, that is deposit plus advances. Our CRAR is 16.45 as on last audited balance sheet, and as gross profit is close 50 crores, which is as on 31st March 2024, the coming at the end of financial year, we will cross 60 crores gross profit. And the continuous net NPA is 0. And with all this sound financial background, these are the other things what we have done. In CBS front, we are having our own office place, that is in Alibag. We are also having all the state-of-art to run the banking business. We are also taking care of all supervisory regulations for this setting while setting up this DR center as well. We are having all security like SOC and asset management softwares, along with the to take care of other things as like IT audits. We undertake a cyber security audit each year. And we are also live on various delivery channels like RTGS, NIFT, IMPS, mobile banking, UPI, all channels that other private and nationalized banks are giving. And the other thing, which since yesterday morning, that we are generating our NPA completely through CBS server. Since last more than since 2015 itself, all our NPA is completely computerized, and it is all the reports, its provisioning. Now, the main topic, which is HR initiatives, I'll come towards it. Human resource functions and human resource management in district cooperative banks, or in rather, I would mention that it is a banking.
how it is needed. When we are considering the presentations on HR management on other levels other than banks, like all the way plays into that. But more or less, HR is equally important in banking as well. As like doing regular banking business, you should be aware of what is regular banking knowledge. You should be possessing all those things. But HR should be also importance in the regular banking. That is the, we believe that is the key of success for our bank as well. We are having just the basic about HRM, that is the different subject I'm handling, because since yesterday all the subjects are related to banking and regulatory aspects we are dealing about. But in this HRM, it's a, when we are bank, we are working as a service industry. And HRM, even though it's playing major and pivotal role in this field as well. And since we are a banking, we are into service industry, customer service and the trust which we are required to build up. That is the only thing we are, for which HR also plays an important role. And to attain the customer satisfaction, and the person who are working with this, they should work with integrity. That is the, when we are deputing any person for any specific task, and when at different branch level, maybe it cashier or counter clerk or maybe an authorizing officer or branch manager, it is requirement of that department that right people at the right places and at the right time to achieve the organization goal is the key of success, which is HRM is required to deal about. The placement of right person starts from the process when we recruit the new staff, from the identification of particular potential candidate. It is that journey starts from, and it ends up to any of that selected employee should take care of the proper integrity along with the customer service should be the equal. Various benefits what we are definite, just like as mentioned, PAX is the main thing when banks are doing business in the rural areas. So while adopting different initiatives, what our bank has did some different initiatives in terms of HR. Our bank employees, we are managing our PAX with our own bank staff. There is no cadre, things called cadre, anything in our district. It must be some stranger thing for you other peoples who are here from the PAX category, but we are doing it. Our own staff is managing all our 127 PAX. They are, because of which all the PAX expenses are reduced to at a larger scale. Majority, almost 98% of our PAX in our district are in profit expenses towards the salary of staff, salary of secretary and other costs. And main benefit which arrived out of it, this system is there is no balance between bank and PAX level. There is zero imbalance since last more than 50 years, 15 years. So that is could have been the rarest thing in because there is no question of imbalance at all. Because our person is looking after them. Their account are opened in a CBS in a shadow model. So whatever the debit and credit place in at PAX level, we are replicating those entries into a CBS model. And likewise, there is no question of imbalance. Whatever the outstanding towards a member, that is the similar at our end, the total society's end. So there is no question of imbalance. Many banks in India face, even I would mention some of the banks that I know, their amount is in some banks it is more than 100 crores. So that is the bigger cause, and there is no, I don't find any reason that how to resolve. This is the bigger benefit that we received role while when our staff is themselves from PAX as well. I'll mention few schemes what we are adopting in our bank to for performance evaluation of our staff. Our all things are called a scheme called Sankalpa Siddhi. Sankalpa, it means a ambition what the bank is setting, and it's a target given to each individual. Each scheme agenda is business growth and responsibility of all the staff, and accordingly the fixed deposit, saving account openings, overall CASA accounts opening, and mobilization of bank assurance business, the different targets are being given to branches, and individual staff is being monitored. The scheme is we implement this scheme at a 4 quarter, that is ends up to June. We evaluate the first quarter. Likewise, it is being evaluated after each quarter end.
And at the end of financial year, we used to give the marks to those individual employees, and based on their performance and merit based only, the best performers only get increment, even additional increment in exceptional cases, and who are not performing at all, even they are punished with the no bonus at all, which is minimum given, but no additional increment. This is the measurement scheme we are of evaluation what we are observing in a bank. It's the scheme called Sankalpa Siddhi. This is the some major highlights I would be happy to mention, because in the last year, total 280 employees participated in the scheme. And amongst those 280, 276 employees completed their 100% target, which was given to them. This is whatever business objectives. The 32,500 accounts were opened into this particular scheme, other than regular banking, whatever they are doing, because whatever the data they are giving it to us, like regarding opening the account, we used to take the names of account holders, address of account holders, and how otherwise the general customer who is coming to the normal banking desk, those accounts are not considered in it. So this 500 plus accounts were open. Then almost 15 was mobilized under CASA. Then under current accounts, 550 current accounts, where 137 crores deposit were mobilized. And in the, under this scheme, where the targets were given to individual employees only towards retail lending only, the total lending we could achieve the amount that is 147 crores plus. Again, that SHG formation was the different target given to at the branches level, not on an individual level. So under this scheme, we formed 1130, and out of those 1350 groups were financed, and around 56 groups were formed under JLG scheme. This is the individual targets, and this is the specific achievement we could achieve because of this scheme, and people are working towards it to get and recognition, not only the form of amount whatever that they are getting as an additional bonus, or not in the form of some increment. They are doing it just to because there is competition amongst themselves to prove themselves or to prove their branch amongst others. Perspective, we are very specific about the there is that there is no board interference at all in any transfer or any promotion. Our chairman, Honorable Jayan Patil sir, he's a MLC of Maharashtra, and other board members who are really specifying very careful about never any of board member or chairman never interrupted in any of this regular. It gets reverse effect when he is trying to transfer it to the any of his convenient location, and if he is going to any of directors, any newcomers like that, so it is getting exactly ulta. So there is no recommendation between no objection then, and we are following that NABARD norms that we used to transfer our staff at the different locations after each 3 years. Training calendar is again being given utmost importance, and each year the training calendar is prepared, and we used to follow it each year. We also used to send our officials here at NABARD, Bangalore campus, even Vamnicom Pune, and even at MSC Bank. That is again they are playing a very important role in DCC banks in Maharashtra. They used to conduct very useful training programs for all of our officers in various categories. And also a special focus on JIB exams like JIB, CIB. Even many officials from our bank are JIB and CIB pass out. And various incentive schemes like for CIB there is 2 increments, and for JIB it is 1 increment. That is the industry standards we are always following, and we are very keen. Other thing what we are doing at HR front is outside at various levels. It's a different thing what our years our chairman sir and a board taking the permanent employees for PO category. Certain number of years, it is becoming difficult to get the work done from them. So it is always being outsourced in our bank, and we are getting really good results because there is no indirect expenses towards that bank has to do, like other their future compensation. We need not to bother about all that, and mainly not only things done very timely and properly with accurate cost. And marketing stuff, I would like to mention the eShakti, which was the really a we worked, we formed under eShakti. Even earlier target which was given to us, it was 2,500 groups. We ourselves approached NABARD for additional sanction of 2,500 groups. So we formed to 5,000 groups.
But the animators, anyways, the scheme is no more working now. But the animators who we were associated with us during that period are still working with us, and we are taking help of them to get the assistance and on the marketing front, mainly to open the. We are taking the help of them, connected to our branches, our staff since last more than 2 years. They are having connections with the customers as well at the ground level. So we are taking help of them as a channels. And so it's because of this all, there is a large reduction in the cost of our bank, which is another added advantage getting out of this outsourcing functions. While dealing with the IT with HR functions, our HR functions function of payroll system, it is completely computerized. All salary generation and other things like leave application, its approval and its rejection, it goes to the grade wise hierarchy, and PF calculation, all in this HR functions with the IT section. And again, dealing with this regular HR practices, the entire share modules and other things, which is being taken care by our administration department only. Entire this work of HR management, share linking, and even other, we called it at EST administration department. So they used to take care of entire transfer, even cash management. It is also lying upon them only. They are really doing well. Our deputy CEO is leading that department, Mr. Wagmode. And total only 8 people are taking care of the entire HR. So when we are talking about HRM, so it's when we used to learn many things about HRM while during studies, but the different challenges what we are facing today is the attrition rate. The attrition rate is very high in banks like such, which are functioning somewhere in the corner of the rural areas. When we are talking about Raigad, some which are close to Mumbai, that is Navi Mumbai, some branches are there. But other part in our district is very like in deep rural areas. So in our area, many the educated staff who used to come to our place, it is difficult for us to retain them to our employees as our employee, because they don't want to work into rural areas. And when we are approaching any candidate, when he is like some IT graduate, so he is getting more opportunity into the cities like Mumbai, Pune, when we are talking about Maharashtra. So they used to prefer to stay in more city areas only. So it is difficult for us to get the candidates to deal about. But because that attrition rate is very high, because they are getting more choices in cities. And again, when we are talking about to hire a better candidates with better qualification, and even at the competitive compensation packages. But again, the problem comes in front of us, maybe even in front of many DCC banks in India as well. The local language. What happened is, in many of our branches where the local. Kindly keep it Yeah, a little brief after this. Thank you. So the language is a major challenge there. Other than that, what we're is 10 lakhs. Again, bonus it is to, even 22% we are giving, and the salary structure is even, again the industry standard. So these are the some keys of success of a bank. We are managing our HR with a professional management, efficient governance. The yesterday's session, whatever governance, required governance we are taking care of. And to strengthen, I would lastly mention HRM really important organization, maybe it a bank or any kind of small or business role. With this, I conclude. Thank you so much again for giving us an opportunity. Thank you. Thank you, Mr. Gupta. Thank you. Extremely grateful to Mr. for a very interesting presentation on HR. As a matter of fact, he's absolutely right. HR is really important for any organization, whether it be big or small. But on the one hand, all of you would agree that the one thing that has really stood out in this presentation was almost the second last slide, which he showed, where he shows that attrition is a challenge. See, normally cooperative banks के staff के लिए हमारे नॉर्थ इंडिया में तो कहते हैं और जगह भी कहते होंगे in their own language कि ना इनको और है ना उनको ठौर है. कोऑपरेटिव बैंक में वही मुलाजिम आता है जिसको कि या तो बाहर में बहुत आसानी से अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन the fact that they are able to attract such staff which is in demand outside,
That itself is very remarkable. I thought that is something which really stood out in your presentation. Apart from that, very interesting things that he has talked about, Sankalp Siddhi, I wish many banks, including mine, could introduce something like this. I mean, this is something which we also sorely miss, although our friends from different categories, different stakeholders within the bank may not perhaps appreciate that. But the fact remains that this is something very remarkable, that a bank like a cooperative bank would think of this. And so far, I would say we were always thinking of Raigad CCB only in terms of its IT initiatives, right? We would never have talked about Raigad CCB in terms of its HR initiatives. Thank you so much for the wonderful presentation. Reddy Garu, over to you. I know you have done wonders for the bank. Many of you perhaps might not be aware that Reddy Garu had already been elevated as CGM in NABARD, in the sense that he had been selected for promotion as CGM, but he gave that up to continue being an MD of the State Cooperative Bank, which itself shows his immense interest in the cooperative sector, and he has chosen to remain an MD of State Cooperative Bank rather than come to NABARD back as a CGM, maybe head some office or a head office department, or maybe a training establishment like the one where we are located right now. Thank you so much. Reddy Garu, over to you. I think there's nothing for leaving NABARD, right? Respected LIG, maybe I gone against this wish also, right? As a elder brother, he did advise me. Somehow got wedded to AppCorp and thought I will lay down my professional career also with AppCorp. Otherwise, had an excellent career in NABARD. Respected J.S. Upadhyayji, Shri Nirupamji, Shri Raghupatiji, my batchmates Nandaji and Bhavani, my predecessor also in AppCorp, Prasad. Many of my colleagues in Bird, Madam, who was very instrumental in starting some tinkering in our HR processes. Let me be very clear. I'm a veterinarian. I've never worked in any of the HRMD departments in either in AppCorp or in any of the other 3-4 organizations I've worked. So I depended on Ma'am Shikha for to start some interventions in AppCorp, very, very tiny interventions. Also, all the some of my colleagues in NABARD who helped me out to bring in some changes in AppCorp. Also, other participants, my co-managing directors of SCBs, CEOs of various DCCBs, PACS officials, and also other dignitaries. A very good morning from AppCorp. Just to give a flavor of our institution, maybe I didn't write a question with Shri Vivekji. That time I thought, can you increase my exposure? Unfortunately or fortunately, sometimes you are number one, and I would like to proudly say there is one thing which we are happy. I am number one borrower from NABARD. Unfortunately, and this year NABARD was kind enough to increase that exposure by another 5% of capital funds of NABARD. So I'm breathing, is heavily borrowing. Last 60 years, we have just completed our Diamond Jubilee. That photograph taken during our Diamond Jubilee, I think it covers the entire chain of commands in cooperative credit system. We have the Honorable Principal Secretary and the RCS who are from the government. And my 92% of business or 91% of his business is with 13 DCCBs. The presidents, all the 13 presidents of that sums up why we are progressing well in the last few years. We are standing on one vision, and that is reflecting in our growth also. Yes, I cannot say that if somebody is a good leader and not in terms of business, it's more how much happiness I can create in my institution. How many of my staff are very happy and own the institution.
these figures. But I need to sustain than the happiness quotient. I don't know, maybe in the days to come, NABARD may come out how happy these institutions are there. Many of my colleagues were telling, ye cooperatives mein chalta hai kya? Chalega bhi hai. If you look at one parameter, business, I think when we took over, it was somewhere around total business, it's somewhere around 13,000 crores. Net NPS or zero. Certain issues on CRER. Maybe we'll be coming out with IPDs very shortly with due permission from our. I think Delaji was telling he brought in, hum kuch nahi laya. I think I'm one among this entire team. MD can't do anything. हम तो बोल सकते हैं. I may not know what is happening in many of the things, including HR, which has brought in. And a team which is very, very young team. हम बोलते हैं DGM बनना है तो 20 years, 30 years experience of चाहिए. I have my colleague sitting here. Maybe he's very shy. Like when I was a faculty here, I used to find out who are the people will be in one corner, kuch because of pure shyness. I don't know why. These are the young guys who are leading it. It's not the chief executive. Just look at the profile. So Amlor Pavanathan says around 480. We are just running with 50% of it. The good part, maybe this side people will appreciate. The women, recent batches, I think somewhere around 60 to 67% are women members. And even in the senior level also, I don't know, say that next 2-3 years, the organization will be with only youngsters who are around 28 to 32. Right now, average age is only 30.8 to be very clear. If you leave out the previous page, people like me who are above close to 60, if you leave out these people, I think it will be still lesser than 28. And this is also a worry. Next 3 decades, they will be there. It has lots of positives and not so positives also. And when you look at their background, in NABARD or in any other institution, we are finding people from around cracking our exam very easily and getting into it. Maybe IBPS need to have a relook at these things. Last year, last recruitment, I created, rather we went through a process where a few posts were reserved for people with agri background. And last 3 recruitment, I'm seeing it's very difficult to get a BA, BCom, MBA into our system. It's more of engineering, including aerospace and whatnot. So that's one area where a lot of emphasis need to be put on reskilling these people to suit to our requirements. Another, right, it's all you all. Much of their active daytime or active time is spent with us in the bank. Can we make it happier? Yes, we offer the best, but we give, हम बोलते हैं management side से best salary दे रहे हैं, but employee side से opinion may be different. Perks दे रहे हैं, अच्छा allowances दे रहे हैं, that's also a subjective thing. अभी अच्छा promotions भी दे रहे हैं, again huge subjectivity. So do anything, there will be a lot of unhappiness. So NABARD में ये है, you are not giving. Oh, we are not giving, right? Things do happen. Really, there is a problem, right? Some of we talk about engagement. When I took over, I did understand that some amount of disengagement was there in our bank, right? Finally, it's only the team AppCorp which need to tackle it, and we did some tinkering in many of the things. This is one of the another youngster who prepared this presentation, and he said there is a
whatever activities we have done last 3 years, he has just consolidated on the 3 P2P model. I don't know what it is also. It appeared very good. I said, yes, fine. He said, a few principles we looked into, recruitment, retention, or skilling and rewarding part of it. More than all these things, I was looking at mostly at work-life balance, where we could do a few things. The first, recruitment and retention. One of my friends was the previous speaker was telling retention is a big problem. For me, attrition is zero, especially in my officer community. Last batch, I would have, when we recruited through a professional agent, your IBPS only, one thing we did was we removed interviews. Last 3 interviews, even for assistant managers. 5 minutes, I don't think we can judge somebody personal interview and recruit. Even after judge and feel that this guy should come, uska exam mark mein kam hoga, so he will never come also. Right? We thought this is not required. And recently I did, I went through their profiles and understood not only that, chota things karte hain hum, like somebody's birthday, that I'm there in the office. First thing we do is we wish the employee happy birthday and great future, and along with a small plant. Then I just talk to him for 2 to 3 minutes just to know what is their background. This removal of interviews, I'm getting an impression, and it's true also, that many of the people from the remote areas could get through my system. Earlier, we used to find in being Nabadian, I used to find many people from the urban areas to get in, and we used to run a rural immersion program just to tell them what is rural. Now I'm finding it in a rural bank, people from happily getting into my institution, and continuously I engage them, engage these new people. They should feel that this is their own organization. And a few times when I interacted, a few people said, we got PO in Bank of Baroda, why you don't leave? Said, this is better. I think you don't need accolades or you don't need clappings when a girl gets up and she says, my institution is Bank of Baroda or any other institution. I think you don't need to deal much with diversity and transparency process. These things will to extend this to all DCCBs also. We are doing some common recruitment for DCCBs. Cut down interviews removal. Naturally, there will be a problem. कोई मित्र बोल रहा था क्या political ये problem नहीं होगा. We need to talk it out. We need to somehow bring the positives into remove these things and bring transparency. We are successful. Second thing is, and people from, I think now the Gen Z is going on, they expect many things. And why my attrition is zero is we make as good and as it meets their expectations, right? More of a hierarchical structure. We have made it more of a agile team. Even as a MD, I think I can know each person by name and interact with each person what the work is doing. 24/7, my door will be open to each and every employee. And to make their life easier, we implemented e-office also. No paper, it's more of a, and we are going to DCCBs also. Coming from NABARD, I just lifted the idea of NABNet. And we implemented COBNet through our own resources. I brought in all the DCCB employees and AppCob into this sphere. Right? It's similar to NABNet, right? Not only a knowledge portal, it's more of even presenting your events, making generation. Maybe a shadi.com could be a click, I think, to get into our COBNet, which will help our banks also in the days to come. No, I don't know. Maybe this I do try and one intervention which I'm very passionate about is Hello Team AppCob.
This is nothing but I copied. I'm not invented nor reinvented. Hands up concept is there in especially ships and other thing, when there is a turmoil and other thing. Every Saturday when we work, that is first Saturday and third Saturday, at 11 o'clock, all the seniors come to the boardroom and all the other officers are given access through VC. And I present my performance in the last 50 days. Clear where we are facing issues and everything what has happened last 15 days, including maybe this weekend, I'll be talking about what are my learnings in these 2 days and benefit the organization. So this one thing, this is the purpose is not. I think each and every employee of my organization should also MD of that institution. Then only things can. If you NABARD says ALCO में ये member होना है, ये में इसमें मैंने बोल दिया, all committees, many of these committees, ALCO or senior officers go there and know what is happening. You get bright ideas, you get whatever interventions we are able to do on this is because of this. And we also given option to all my employees, apart from as part of training, we send them to DCCBs, to packs. We have asked all my employees to adopt one pack. And whatever intervention they want, we will support you. Like we are looking at, see, it's part of giving back to society also. Part of hand-holding the come forward. It's not a compulsion. Few have come forward. When we did our Diamond Jubilee on August 4th, Honorable CM was there. After seeing the performance and other thing, he immediately called us on 10th of August, had a review, and the same team was sitting. I think from the picture, you can see some youngsters are more closer to the top than the youngsters are all of my DJs. Right, that is the empowerment we are giving. They're able to network, they're able to get along with the government also. A few more things we have started to implement the same also. We're all on the same thing. Performance appraisal was revamped. We took a help of a committee headed by our Mohanaya sir. We did it. We are planning and every year the process is being implemented with utmost transparency. So no wonder you find young officers at the helm of my institution. Right now I have around 21 DGMs, out of which 13 are around 30 years, right? We have come out with earlier, there's a concept of ex people used to take 30-day salary as ex gratia and issue so many things. Now we have come out with PLI, productivity linked bonus, incentive. A clear matrix has been developed, like my previous speaker was indicating. A clear matrix has been developed. And based on that, how many days the people will be eligible, we are disposing it. Added to that, apart from allowances, yes, other chota things I think we're also into that, like Pluxy, your Sodex's current implemented. Then we're also tying up with various institutions like Metro cards are making. One more thing is Kudo cards. Kudo cards is nothing but when I employed as a guy, personally go to them and hand over a card saying that you've done a great job, you've done a I'm very happy with your performance, right? Many of the staff would like to display that in their cabins even. One important thing and one prime focus is on skilling our staff members. The plan is that every staff member should undergo at least one training or exposure in it. We have strengthened our CTA also by bringing in 4 senior retired cadre officers from the commercial bank, so that they can train us on IT, they can train us on agri and many other things, right? And I also made it a point to allow all the young teams to visit all the, I think they would have covered at least 2022 SCBs as of today. Even 2 weeks back, one team was there with our Oraji,
and Sakyaji also. They went to Rajkot, and then they also went to Gujarat SCB also. And lots and lots of, apart from functional, MDBs are being held. We have tied up, apart from Bird, ma'am did another 1 or 2 programs for us, exclusive program. The lady officers have been sent for an MDB program. Now a team is going to IM Trichy, and again on a leadership program. Various nation, including doing it. There are also, we are also encouraging our staff members to acquire specialized knowledge like IABF. 1-year courses, there are risk, everything is coming through risk. So one of with a national institute on risk-based lending or risk-based appraisal, right? We also tied up with Commonwealth of Learning Canada for providing good inputs on micro learning also. Here, 1 minute call is being, audio call is being sent. Yeah, 2 minutes I'll close. 1 minute call is being sent to all the employees, including PAX employees, PAX, then DCCB employees and AppCop, including MD. We get a 1 minute call, every 1 minute audio message. And on the latest things, whatever is happening, starting with the NPS, starting with crop learning and all those things, it is working well. The main important thing which we are looking at is, as I said in the beginning, it is work-life balance. We have, so I've moderated the wording here. It is get out at 5 p.m. policy. We don't sitting at up to 8 o'clock. I know what will be their efficiency. Kindly leave at 5 o'clock and be better off and spend time with your families. We are also, I don't know why claps are coming for asking. I think there is life beyond banking, and NABARD में हम भी बहुत दिन office में 8 तक बैठते. That will not serve any purpose. You get out at 5, you will do better job, right? Second thing, हम पूछते हैं staff को 10 बजे का आओ, you put thumb or face recognition. अभी कुछ नहीं है. You play national anthem at 10:01. It is not our, again, one DCCB was doing. We play national anthem at 10:01. Even I felt embarrassed one day. I came at 10:01, it was playing. I was standing on the steps. It was such an embarrassing thing to see MD standing outside and not coming on time. Next day onwards, it was 9:45. That has brought in so much anthem at 10:01, providing additional leaves to our women employees. And many events, including festive events, right? Sir, I'll just take 1 more minute, sir, if you don't mind. The purpose is to happy environment, right? And in a nutshell, if I want to conclude here, I think we brought in a culture of it's my app, it's my institution. Is it 100%? I don't say that. I can't be, it can't be an ideal institution. There will be some voices, and you have to take it very positive and with them. Let me also say that we have stopped memo culture in AppCo. I have never issued a memo in the last 3 years, 9 months, right? And when you create a happy workplace and happy, your employees are happy, you would have seen the performance in the second slide. It shoots up. And I don't need to talk about my business anymore if I can keep my employees happy, right? There are many other things we are planning, right? We are our premises is very tiny premise, AppCop journey wall. And then we are also creating a honor wall where all employees who have excelled, their photos will be displayed. And more importantly, we are creating our heart of AppCop. It's nothing but my staff. So all their photos are being displayed. See their faces. By the way, many accomplishments by my colleagues. Two of our DGMs have been asked to join Ministry of Cooperation as Deputy Registrar. They bluntly refused. They asked for joint registrar position. Right? Many of them are submitting research papers and getting through. And by the way, it is as per the your world cooperative report, monitor report, it is 182. It's somehow 18 and 2 are here. AppCop stands at 182. I don't say best, one of the inter performance 4th, much awarded by NAPSCOP, and recently one of my team took an award
from banking frontiers also last week. Thank you. Thanks for the patient hearing. Thank you again to Bird and NABARD for giving me this opportunity. Thank you. Thank you so much, Reddy Garu. I think there are definitely lessons for each one of us, including yours truly. A few things which really stood out in your presentation. One, of course, is the average age being 31. Then I was very, very attracted by this thought of, new recruits coming majorly from the rural background. So Nirupamji will agree with me that whether it be the Indian cricket team or it be employees in cooperative banks, it is basically a fact that people are now getting recruited, inducted into the cricket team as also in the team of APCOB from very, very interior areas. Otherwise, if you talk of the Indian cricket team, there was a point in time when it used to be limited to Xavier's Bombay, the kids who would have, in Shivaji Park, or for that matter from Bangalore and maybe from Delhi. Otherwise, people would not get an opportunity. Now you have a 10, 15 years ago, all this journey started. So, I mean, something very remarkable about your bank. That is something very impressive. Apart from that, of course, the thing about Hello Team AppCorp, I thought that is very, very wonderful. And you seem to have really taken all the lessons which you would have learned from Shikha ma'am, during the course of your tenure here in Bird. You've taken them all very seriously. And the only two things which I thought were on the flip side, in spite of it being, mentioned as a very important positive, the fact that engineering background, 80% of the workforce coming from engineering background is perhaps not the best of things to happen for any organization, the kind of which we work in. I think there is need for diversity. So how do we ensure diversity? That we will surely have to look at, because many of us will agree that even in IIMs, etc., we find that there was a point in time when only engineers would get through. And in civil services also, there was a certain section of students who would get through. But now we have a little more diversity. So there is a need for diversity. And the other thing which I think we take it as a positive for our organization, 0% attrition is perhaps also not very good. We must have some churn happening in the organization. So because this could also be, I don't know whether it is, but at some point in time, it could also become like some kind of a complacency within the organization, on account of which people are not choosing to leave our organization. So that is the other part. But all in all, I mean, full marks to you, Reddy Garu, for a beautiful, crisp presentation and the kind of initiatives you've taken, right? And then with the permission of the House, I will now take my place there, which is rightfully mine. Having waited for 3.5 long hours, for a faculty member to keep quiet for 3.5 hours. Thankfully, they made me chair the session. At least I got some say in the matter. Thank you. I hope and believe I am audible to everyone. From here, it's good afternoon from Nilay. Absolutely a pleasure being here. Would have loved to be here yesterday, but for reasons which were beyond my control, official reasons at that, I couldn't make it here. Should have been here yesterday, because I am given to understand very beautiful sessions have taken place, part of which, of course, I could witness on the YouTube, but obviously not the full day. I mean, given the kind of quality presentations which have been made since morning, one can imagine when one was talking about the IT initiatives, which I understand very little of. So, I mean, I would definitely have been very enriched when compared to everybody else here. Well, friends, my co-panelists, Nirupamji, CGMs of IDD, my good dear friend Raghupati, faculty members from Bird, कोऑपरेटिव बैंकर्स प्रदीप वोरा जी वहां बैठे हुए हैं, मेरे पुराने मित्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के। सखिया जी अगर यहाँ पर हैं तो मेरा आग्रह के कारण है, मैंने जब आईडीडी के साथी लोग आए थे तो सखिया जी के बारे में मैंने जिक्र किया, और मैंने कहा कोई भी कोऑपरेटिव बैंक का सेमिनार हो और उसमें राजकोट सीसीबी की बात ना हो, और गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के इनिशिएटिव्स की बात ना हो, और हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की बात ना हो, तो बात अधूरी रह जाती है। So I am really grateful to you, Mr. Sakhya, for having made it, and Mr. Vora for having made it here. Wish Mr. Ajay Bhai Patel also was here yesterday, but I am given to understand he was unwell and could not make it. Well, my dear friends, let us accept
that we operate in an environment which is absolutely disruptive. आजकल तो हम सब लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी की जिस तरीके की बातें होती हैं आजकल, जब हमको आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती हैं, तो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स के ज्यादातर साथी लोगों को डेफिनेटली मुश्किल आती होगी, क्योंकि इतना वॉलेटाइल एनवायरनमेंट है, कंप्लीटली अनसर्टन. इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट एंड वेरी डिसरप्टिव एनवायरनमेंट. तो इन सच काइंड ऑफ अ डिसरप्टिव एनवायरनमेंट, हाउ डू आई ऑपरेट, हाउ डू आई फाइंड माई स्पेस? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, कोऑपरेटिव बैंक से जब भी बातचीत होती है, वोरा जी को और सखिया जी को जरूर याद होगा, हमारे अमरेली से भी साथी हैं, खेड़ा सीसीबी से भी मित्र नजर आए, उन लोग को याद होगा जब भी कोऑपरेटिव बैंक, यानी मैं पैक्स तक बातचीत किया हूं गुजरात में रहते हुए, और मैं हमेशा ये कहता था कि कोऑपरेटिव बैंक्स को अपनी खोई हुई जमीन तलाशनी है और नई जमीन भी साथ साथ में तलाशनी है, क्योंकि केवल खोई हुई जमीन को तलाशेंगे तो बात नहीं बनेगी. हमें खोई हुई जमीन को भी तलाशना है और नई जमीन को तलाशना है, और नई जमीन को जब हम तलाशेंगे तो हम तमाम तरीके की इनोवेशंस की बातचीत कर पाएंगे. Somebody made a mention, I think Mr. Manta was making a mention about the local language advantage, and a mention also was made about the fact that cooperative banks and the cooperative societies have obviously a big advantage of being local people. मैं आप लोगों को बहुत पुरानी ये घटना पे ले जाना चाहता हूं. आप में से कुछ लोगों ने शायद मेरे मुंह से सुनी भी होगी. चिंताला जी हमारे पूर्व अध्यक्ष और मैं बहुत जमाने पहले, मेरा ख्याल है 2000 की बात होगी या 2001 की बात होगी, हम लोग अमृतसर में आखिरी पैक्स जो थी बॉर्डर के करीब, वहां गए हुए थे. और ये उस जमाने की बात है कि जब कमर्शियल बैंक्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था, पैक्स के थ्रू महंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था. उसके बाद में आपको याद होगा जब अटल जी की सरकार आई तब 9% की बात हुई, फिर 7% की बात हुई, सबवेंशन की बातचीत हुई. लेकिन बहरहाल ये वो जमाने की मैं बात कर रहा हूं. तो क्या था कि जितने भी फार्मर्स थे हमारे, उसमें ऐसे तमाम सिख हमारे भाई लोग थे जो किसान थे, उनकी भौहें भी सफेद थी बिल्कुल, आईब्रोज वर वाइट एंड एवरी स्टैंड ऑफ हेयर इन द बियर्ड वाज वाइट. इतने पुराने कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए मित्र लोग थे और सबने बड़ी शिकायतें की. तो मैंने उनको प्रवोक करने के लिए एक प्रश्न किया, जब आपको इतनी तकलीफ है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो आते क्यों हैं यहाँ पे भाई? सामने बैंक है, नाम नहीं लूंगा मैं बैंक का, सामने पब्लिक सेक्टर बैंक है, वहां क्यों नहीं जाते? वहां ब्याज भी सस्ता है. अच्छा, उस जमाने में क्या था कि आपको काइंड कंपोनेंट भी जबरदस्ती लेना पड़ता था कोऑपरेटिव सोसाइटी से. बाद में तो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है, तो उस बात पे मैं नहीं जाऊंगा. लेकिन बहरहाल ये मसला था कि आपको सस्ता भी कर्जा मिल रहा है वहां बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक में, वहां पे पूरा का पूरा कैश में मिल जाता है और जल्दी काम हो जाता है. और यहाँ ये सारे डिसएडवांटेज थे. तो मैंने ऑब्वियसली पूछा कि यार फिर आते क्यों हो यहाँ पर, जाओ ना वहां पर. तो उन्होंने जो बात कही, मैं आपको आज भी गूज़बम्स आ जाते हैं मुझे बताते हुए, कि उन्होंने 3 बातें कही विच हेल्ड स्टूड आउट इन फेवर ऑफ कोऑपरेटिव्स. उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि वो बैंक जो है मेरा अपना नहीं है, सोसाइटी मेरी अपनी है. दूसरी बात उन्होंने कहा कि सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है वो मेरे तरह के कपड़े पहनता है, बैंक का मैनेजर या बैंक का स्टाफ मेरे तरह के कपड़े नहीं पहनता है. तीसरी बात उन्होंने कहा वो मेरी भाषा बोलता है, बैंक का मैनेजर तो मेरे लिए भाषा नहीं बोलता. और जो चौथी बात थी साथियों, वो सबसे बड़ी थी, जो सो रिमार्केबल, उन्होंने कहा चौथी बात यह है जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि मैं जब पब्लिक सेक्टर बैंक में जाता हूं तो मेरा काम तो जल्दी जरूर होता है, लेकिन काम खत्म होते ही मेरी ओर वो ऐसे देखता है कि काम खत्म हुआ चल फूट. लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब जाता हूं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी मेरे को अपनी भैंस से लेकर अपनी नानी तक का हाल बता देता है, और मेरी भैंस से लेकर मेरी दादी तक का हाल सुन लेता है. तो कोऑपरेटिव की ये ताकत है. अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूं कि कोऑपरेटिव्स हमारे तमाम हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव्स इस ताकत को नहीं पहचान पा रहे हैं. अगर कोऑपरेटिव्स अपनी इस ताकत को पहचानेंगे तो कोई वजह नहीं है कि कोऑपरेटिव्स अपनी खोई हुई जमीन को नहीं वापस ले पाएंगे. देखिए हमारी दिक्कत क्या है, आंकड़ों में इतने ज्यादा हम घिर जाते हैं. इवन फ्रॉम नाबार्ड स्टैंड पॉइंट आई विल से 11% का मार्केट शेयर, भाई तुम सिर के बल भी औंधे हो जाओगे तो इस डिनोमिनेटर, इतने बड़े डिनोमिनेटर पे तुम परसेंटेज को नहीं बढ़ा पाओगे. ये आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूं. ये शेयर को नहीं बढ़ा पाएंगे आप परसेंटेज टर्म्स में, आप क्वांटम को बढ़ा सकते हैं, और क्वांटम को बढ़ा सकते हैं, और इंडिविजुअल कोऑपरेटिव बैंक की ग्रोथ रेट को आप मतलब उसमें नहीं, दशमलव में नहीं आप बढ़ा सकते, आपको डबल करनी पड़ेगी. उस तरीके की ग्रोथ जब आप करेंगे अग्रेसिव तरीके की, तब आपकी बात बनेगी. और ये बात बनेगी, मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक ना आपका एचआर आपके साथ है तब तक आप वो चीजों को नहीं कर पाएंगे. और सबसे बड़ी बात यह है कि कोऑपरेटिव बैंक्स के सिलसिले में
हमारे यहाँ पे कमेटी बनी अमलोर पवनाथन सर की अध्यक्षता में, जिसके करतक जी भी मेंबर थे, वोरा जी भी मेंबर थे, और तमाम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के मिस्टर बातिश, if I remember correctly, he used to be from Punjab State Cooperative Bank. There was one gentleman by the name Mr. S.S. Sandhu, the principal secretary of corporation from the government of Maharashtra. ये सारी बातें हुई जरूर वहां पर, लेकिन एक मसला फिर भी अधूरा रह गया। जो कोऑपरेटिव्स की रीढ़ है, कोऑपरेटिव्स की जड़ है, वो है कोऑपरेटिव का मेंबर। वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जो सबसे क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्स है एज फार एज कोऑपरेटिव सिस्टम इज कंसर्न। और जब तक हम मेंबर की एजुकेशन नहीं करेंगे, मेंबर को जब तक हम एजुकेशन के तौर पर हम उसको राइट्स के बारे में और उसके प्रिविलेजेस के बारे में और साथ साथ उसकी ड्यूटीज के बारे में नहीं अवगत कराएंगे, उसकी मेंबर की अवेयरनेस नहीं करेंगे, तब तक कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, फिर वैसा ही होगा जैसा दादी ने जाते समय अपनी पोती को कहा था कि बेटा पौधे की खूब देखभाल करना, 10 दिन के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। और दादी जब वापिस आई तो उसने देखा कि पौधा एकदम मुरझाया हुआ था। तो बेटा ये तो पौधा मुरझा गया, दादी तुमने कहा था ख्याल रखना, मैं तो रोज पानी देती थी, सॉरी मैं रोज उसकी पोछा पाछी करती थी, रोज पोछ देती थी, बिल्कुल सुंदर सुंदर लगे पौधा। तुमने सब कुछ तो किया, लेकिन तुमने जड़ के ऊपर तो काम ही नहीं करा। जड़ के ऊपर जब तक काम नहीं करेंगे तब तक कोऑपरेटिव्स को हम मजबूत नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट एज दे आर in the case of cooperative societies. And believe me friends, unless we do the education of members, and very importantly alongside that, the education of PAC's board of directors, education of cooperative banks board of directors। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत जमाने पहले, बैंक का नाम मैं नहीं लेना चाहता, एक डीसीसीबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैं एड्रेस कर रहा था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यह शिकायत थी कि ये बैंक वाले मेरे को ना बैंक गाड़ी नहीं देते। अरे मैंने कहा महाराज पहले बैंक बचाओ, उसके बाद बैंक बचेगा तब तो गाड़ी मिलेगी। द बैंक इटसेल्फ विल नॉट बी सेफ, देन व्हाट द हेल विल यू डू विद द कार, है ना? कार तो आपकी उठा के ले जाएंगे लोग, अल्टीमेटली बैंक ही नहीं बचने वाला, तब तो बोर्ड मेंबर रहोगे। तो कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एवरीबडी इज नॉट एज फॉर्चुनेट एज गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, everybody is not as fortunate, as the ones that have been mentioned, the good examples which have been mentioned. Quite a few of them are those जिनके बारे में lesser said the better it is। लेकिन इसका मतलब हम हार मान के बैठ जाएं, ये तो मुनासिब नहीं है। हमें तो काम करना होगा, और ये पूरे सिस्टम का दायित्व है, राइट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो मैंने अपने C2D के इंटरव्यू में जमाने पहले बख्शी सर को बताया था। मैंने कहा कि घड़े के अंदर का अंधकार, जब तक आप अंदर मोमबत्ती नहीं जलाएंगे तब तक नहीं दूर हो सकता। आप कितना भी ऊपर जला लें मोमबत्ती, घड़े के अंदर का अंधकार समाप्त नहीं होगा। और घड़े के अंदर का अंधकार तभी समाप्त होगा जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव बैंक्स के एचआर के ऊपर काम करेंगे, विशेष रूप से उन लोगों को अवगत कराएंगे। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे बड़ा एचआर इंटरवेंशन नाबार्ड की तरफ से अगर कोऑपरेटिव बैंक्स के रेफरेंस में किया गया, वो था डीएपी एमओयू का। आप में से कितने लोग ये माने न माने, मैं ये आपको कह रहा हूं कि पहली बात, कोऑपरेटिव बैंक को डीएपी एमओयू बनाने की जब बारी आई तो लोगों को ये एहसास हुआ कि हम यार बैंक हैं, वी आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमें कॉस्ट ऑफ फंड्स की चिंता करनी पड़ेगी, रिटर्न ऑन एसेट्स की चिंता करनी पड़ेगी। ये लाला जी की दुकान नहीं अग्रवाल पूरी भंडार की जो हमने चाह कर लिया। इट इज नॉट लाइक दैट। वी हैव टू नेसेसरीली अंडरस्टैंड व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ फंड्स, what is my return on assets, what am I doing to increase my business, is my business increasing at a fast enough pace to be able to compete with the market। मैं यहां पर राजकोट सीसीबी की बात करता हूं। राजकोट सीसीबी डज नॉट मीन मिस्टर तारपरा, late Mr. Tarpara, who has laid huge foundations, I would say। I think none of us sitting here can do a seminar on cooperative bank without remembering late Mr. Tarpara, who used to be the CEO of Rajkot CCB। वो आदमी 250 ब्रांचेस की डेली की अचीवमेंट का रिव्यू करके तब घर जाता था रात को, चाहे कुछ भी हो जाए। सखिया जी सहमत होंगे इस बात से, उसी फ्लोर पे बैठते थे। तो जब तक हम ये बात का एहसास नहीं दिलाएंगे अपने ब्रांच को कि यू आर नॉट गेटिंग योर सैलरी, यू आर अर्निंग योर सैलरी, ये हमको ट्रेनिंग के माध्यम से करें, ओडी इंटरवेंशन के माध्यम से करें, कोई और प्रकार का इंटरवेंशन हो। मैंने अपने चेयरमैन सर को भी रिक्वेस्ट किया था कि सर मुझे नहीं पता पैसे कहां से आएंगे, वेदर वी मार्केट दिस आइडिया टू जीआईजेड, जीआईजेड दे पैसा, भारत सरकार दे पैसा, लेकिन घड़े के अंदर के अंधकार को अगर समाप्त हमें करना है तो देयर इज नो अदर गो but for ensuring that the capacity building of members, capacity building of PAC secretaries, and of course everybody else involved in the entire system, most importantly that of the board of directors, both at the level of PACs
and the district cooperative bank, state cooperative banks are still a little more lucky, क्योंकि वो स्टेट हेडक्वार्टर्स के लेवल पे हैं, तो फिर भी वहां पर कुछ प्रोफेशनल्स हैं। अदरवाइज डीसीसीबी में तमाम जगहों पे आपको मालूम होगा, हमने कहा जी प्रोफेशनल होने चाहिए, कोई बात नहीं, एक कोई अपनी जान पहचान का बंदा जो वकील था उसको हमने बोर्ड में रख लिया, वो हो गया भाई। Raghupati will know this better than me. He has commented on so many inspection reports. So that is something which is really important. हमको करना ये होगा कि बहुत ही एग्रेसिवली एचआर के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर। जब तक हम ये करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। हम लोग हमेशा, आपको याद होगा कि एक जमाना था जब हम लोग कहते थे कि द बिग विल ईट द स्मॉल, हमेशा होता था ना ये बात कि भाई जो बड़ा है वो छोटे को संभाल लेगा, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। लेकिन अब ये समझ लीजिए कि डिक्टम बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज का एनवायरनमेंट ये नहीं है कि द बिग विल ईट द स्मॉल, इट इज द फास्ट हु विल ईट द स्लो। जो स्लो मूवर होगा उसको फास्ट मूवर खत्म कर देगा बिल्कुल, यू विल बी एक्सटिंक्ट। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन, आई एम रिमाइंडेड ऑफ जगदीश कपूर कमिटी व्हिच हैड पॉइंटेड आउट एट वन पॉइंट इन टाइम दैट नो इंस्टीट्यूशन वर्थ इट्स नेम हैज गॉट ए डिवाइन राइट टू एग्जिस्टेंस। किसी भी संस्था को ईश्वर के द्वारा प्रदत्त अधिकार नहीं है कि वो सदा चलती रहेगी। अगर नोकिया तबाह हो सकती है, एम्बेसडर मार्केट की नजरों से हट सकती है, कोडाक हट सकती है, और तमाम तरीके की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बड़ी बड़ी, आपको याद होगा सब लोगों को किस तरीके से 2008 में एक आंधी आई और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन अपने घुटनों पे आ गई। तो हमारी कोऑपरेटिव बैंक जो कि 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ की बिजनेस करती है, उनकी क्या हस्ती है भाई। और एक गलती काफी होती संस्था को बर्बाद करने के लिए। कहते हैं ना, एक गलती हो गई और संस्था बर्बाद हो गई। उसके बाद तो हम कहते हैं ना कि फिर लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई, फिर तो सदियों में तो आप गायब हो जाएंगे बिल्कुल। तो एचआर के ऊपर जब तक काम नहीं होगा, एचआर के ऊपर ये इनिशिएटिव्स नहीं लिए जाएंगे, एचआर को ये नहीं बताया जाएगा। पहला प्रश्न तो मैं किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में जाता हूं तो पूछता हूं स्टाफ से, ये बताओ कि जब तुम बस में, ट्रेन में, जहाज में चलते हो, पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति जब तुमसे पूछता है कि तुम कहाँ नौकरी करते हो, तुम फक्र से बताते हो तुम कोऑपरेटिव बैंक में काम कर रहे हो, या दबी आवाज में कहते हो कोऑपरेटिव बैंक में काम करते हैं? बताइए भाई। If I don't feel proud over the fact that I work in a cooperative bank, imagine I'm 30, 35, 40 years of age. I have to spend the remaining 30, 35, 25, 40 years of my life, in the same organization. And I don't feel proud about the fact that I work in that institution. Agar ye nahi hai, so there is something seriously wrong. And that something seriously wrong will have to be addressed, not by outsiders. कितने भी सेमिनार कर लेंगे, जब तक कोऑपरेटिव बैंक के सीईओज और कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे, यकीन मानिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम कितने भी सर्कुलर इशू कर लेंगे, कितना भी ये कह लेंगे कि हम पैक्स को मल्टी सर्विस सेंटर बना लेंगे, वही कहानी याद आती है जो कुछ दिन पहले मैंने अपने सेशन में कहा था कि चूहा जो था कूदता हुआ पहुंच गया गंगा के किनारे, इलाहाबाद में पहुंचा स्वामी जी के पास में और बोला, स्वामी जी मेरे को आशीर्वाद दे दो, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। तो स्वामी जी ने आशीर्वाद दे दिया, तुम बेटा कुत्ता बन जाओगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नाउ द कैट विल बी अफ्रेड ऑफ यू। बट वहां जब पहुंचा, कूदता हुआ चूहा होता है, बेवकूफों की तरह पहुंच गया, बाकी चूहों के बीच में कूदने लगा और कहा उसने ये कि भाई ऐसा है कि मेरे को तो स्वामी जी ने आशीर्वाद दे दिया, अब तुम अपनी चिंता करो भाई। तो अपनी चिंता कैसे करो भाई? उन्होंने कहा अब तो मैं कुत्ता बन जाऊंगा, व्हाई शुड आई वरी, नाउ यू वरी अबाउट द कैट विल वरी अबाउट मी। उन्हें वो सब तो ठीक है, ये तो बताओ तुम बनोगे कैसे कुत्ता? मल्टी सर्विस सेंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दो, बन जानी चाहिए, कैसे बन जाएगी भाई? कह रहा स्वामी जी ने आशीर्वाद दे दिया है। तो स्वामी जी ने जो आशीर्वाद दिया है, स्वामी ने ये कहा कि देखो मैं भारत सरकार हूं, मेरा काम है स्कीम बनाना, ऑपरेशनलाइज तुम्हें ही करना पड़ेगा, ऑपरेशनलाइज तुम्हें ही करना पड़ेगा। और ये बहुत ही गंभीर विषय है साथियों, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू। वी मे लाफ ओवर इट एट दिस मोमेंट, बिलीव मी फ्रेंड, जब तक ना हम अंदर के अंधकार को समाप्त करने की कोशिश खुद से करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक का जो नेतृत्व है, जब तक कोऑपरेटिव बैंक का नेतृत्व, मैं कहता हूं प्रदीप वोरा जी ने आज से जमाने पहले अपनी संस्था में इंट्रोड्यूस कर दिया था। मैं तो कोविड के बाद, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कोविड खत्म हो गया उसके बाद में एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को दोबारा लागू करने में मुझे हेड ऑफिस जैसी, नाबार्ड जैसी संस्था में मेरे मुंह से झाग निकल आई। जब मैं जिद पे अड़ गया, मैंने कहा सारे वायरस कोविड के उसी एक्सेस कंट्रोल के ऊपर नहीं बैठे हुए हैं और मैं कल से लागू कर रहा हूं पीरियड, तो मैं जहां चिल्ला रहा हूं, जिसके सामने कह रहा हूं करो। वोरा जी तब लागू कर चुके थे, आज से 10 साल पहले से। तो मैं जानता हूं, पता नहीं कितने पहले से होगा, कि 3 दिन अगर आदमी ने एक्सेस कंट्रोल में लेट हुआ
तो अपने आप से छुट्टी कट जाती है। वहां पे ये नहीं है कि अजय भाई पटेल के पास जाके रिक्वेस्ट करे या हिमांशु भाई को बोले हिमांशु भाई लेट हो गया सॉरी सॉरी वरी को बात ही नहीं है भाई, वो तो सिस्टम जनरेटेड है, अपने आप छुट्टी कट जाती है, बात खत्म हो गई। तो कहने का ये आशय साथियों कि ये चीज हमको करनी पड़ेगी। कंप्यूटराइजेशन जबरदस्त इनिशिएटिव है, कोई शक नहीं है, लेकिन क्या केवल कंप्यूटराइजेशन काफी है? Computerization is not enough. We will have to work on the mindset of the packs. हमें काम करना होगा उनके ऊपर। मुझे बहुत अच्छा लगा जब रेड्डी गारू ने बताया कि इन्होंने अपनी कोऑपरेटिव बैंक में सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया कि करीब करीब 22 या 21 कोऑपरेटिव बैंक्स की बता रहे थे वो कि इतने कोऑपरेटिव बैंक में विजिट होती है भाई। मैं तो अपने साथियों को नाबार्ड में कहता हूं कहीं जाके देखना हो कोऑपरेटिव बैंक तो वहां जाके देखो कि जिसके बारे में कहते हैं कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहां पर है, कहते हैं यार वो ऐसा है कि वहां जब जाओगे ना तो 9 मंजिल की एक बड़ी सुंदर सी बिल्डिंग दिखेगी, उसके पीछे की तरफ है, और वो सुंदर सी बिल्डिंग कौन सी है? राजकोट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की है। तो यू हैव टू बिकम अ लैंडमार्क इन दैट एरिया, और लैंडमार्क बनने के लिए विट्ठल भाई रडाडिया जी लेट उनके कहने से नहीं होगा केवल, अल्टीमेटली द मैन पावर हैज टू इंटरनलाइज व्हाट वी आर वांटिंग टू डू। बहुत सी चीजें ऐसी है, मैं बता रहा हूं साथियों। एक हम लोग किया करते थे ओडी में, मुझे नहीं पता हमारे पास अवसर है कि नहीं है इस बात को करने का, एक होता था रोल एम्पावरमेंट मॉडल। अपने स्टाफ को केवल इतना कीजिए भाई, इतना पूछने की कोशिश कीजिए कि ये बताओ कि तुम बहुत सारी चीजें कहते हो ना, हमारे सीनियर मैनेजर्स भी इस तरीके की बातें करते हैं जो कहते हैं कि भाई ऐसा है कि हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारा लीडरशिप हमको करने नहीं देता। कहते हैं भाई तुम सिर्फ इतना बता दो यार, 10 पॉइंट ऐसे लिख के दे दो, सोच सोच के दिन भर सोच लो, 10 चीजें ऐसी जिसके लिए तुमको करने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी है भाई, यू डोंट हैव टू टेक एनीबडीज परमिशन। ऐसी 10 चीजें हैं क्या तुम्हारे बैंक में विच यू कैन डू विदाउट टेकिंग एनीबडीज परमिशन? आई एम श्योर देयर आर मेनी यू आर नॉट एज दिस एम्पावर्ड एज यू थिंक। No cooperative bank MD, no cooperative bank CEO, no cooperative bank branch manager is disempowered to such an extent that he cannot do without anybody's permission. ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आदमी खुद ब खुद कर सकता है, और जब तक वो खुद ब खुद करने वाला जज्बा कोऑपरेटिव बैंक्स में नहीं आएगा, उनके सीईओज में नहीं आएगा, तो हम तो फिर इंतजार करते रहेंगे कि कोई राजा राम मोहन रॉय आएंगे, कोई छड़ी घुमाएंगे और महिलाओं का उत्थान हो जाएगा। भाई होता था ना, राजा राम मोहन रॉय आएंगे तभी उत्थान होगा। और या तो फिर ये कि हम सब लोग हैं कि कृष्ण की भूमि में बैठे हुए हैं, इंतजार है कि जब जब कलयुग आएगा घर घनघोर, तब से भगवान आएंगे, बांसुरी बजाएंगे और बंसी वाला सब ठीक कर देगा। बंसी वाला आने वाला नहीं है, समझ लीजिए, वो आएगा तब तुम्हारी मदद करने के लिए जब तुम खुद अपनी मदद करोगे, अदरवाइज बंसी वाला भी नहीं आने वाला है मदद करने के लिए। जब तक एचआर के ऊपर इनिशिएटिव्स बैंक की तरफ से अपने आप नहीं लिए जाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए बैंक के द्वारा नहीं लिए जाएंगे, एंड दूसरी बात, कोऑपरेटिव बैंक ये कभी ना भूले कि मेंबर मेरा मालिक है, और कोऑपरेटिव बैंक वाला ये कभी ना भूले कि वो डिपॉजिटर, ये स्टाफ को बताने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं कि एचआर पे कोई बहुत बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें बताने की जरूरत है अपने स्टाफ को। कोऑपरेटिव बैंक के काउंटर पे बैठने वाले व्यक्ति को ये बात समझ में आनी चाहिए कि गंदी सी धोती और या गंदी सी लुंगी पहन के आने वाला डिपॉजिटरी तुम्हारी तनख्वाह पे कर रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी गलतफहमी है भाई, क्योंकि ये पक्का समझ लो कि जो कर्जा ले रहा है वो तुमको ब्याज दे रहा है, और वो ब्याज तब तुमको दे पा रहा है जब किसी ने सस्ता डिपॉजिट तुम्हारे पास रखा है। हर ग्राहक तो तुम्हारे पास आता है, वो चाहे गंदे कपड़े पहने चाहे सुंदर कपड़े पहने, अल्टीमेटली ही इज योर कस्टमर, और उसको अच्छे से ट्रीट हमने नहीं करा तो दुकान दूसरी ढूंढने में किसी को वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको कि जब नोकिया को ये लगा कि यार हम 2 सिम वाला कार्ड नहीं बनाएंगे, फोन नहीं बनाएंगे, तो दुनिया में कोई नहीं बनाएगा। अब आप तो 2 सिम वाला कार्ड बनाते रह गए, आप सोचते ही रहे उतनी देर में सैमसंग वाले ने और चाइना वाले ने तमाम मॉडल्स बना दिया, अब तबाह हो गए भाई, है ना। तो ऐसे ही तबाह होते जाते हैं संस्थाएं। नो इंस्टीट्यूशन लाइक आई मेंशन्ड अ व्हाइल बैक हैज गॉट अ डिवाइन राइट टू एग्जिस्टेंस। ये सभी कोऑपरेटिव बैंक वाले समझ लें कि तमाम एचआर के इंटरवेंशंस, उसके लिए किसी थ्योरी की जरूरत नहीं, तमाम ऐसी छोटी छोटी चीजें, तमाम ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स जो रेड्डी गारू ने भी जिक्र किया, दे मे बी मेनी मोर सच ग्लोरियस एग्जांपल्स, बट दोस ग्लोरियस एग्जांपल्स हैव टू बी innovated, put into place, and I'm sure he does not require anybody's permission to ensure that people come on time, other than introducing that element of 1001 national anthem. I thought that was an amazing perspective. रही बात वर्क लाइफ बैलेंस की, आई विश मेनी इंस्टीट्यूशंस कुड थिंक लाइक द वे यू थिंक, although that's another matter. that दूसरी बात में
पैक्स के बारे में मैं कहता हूं हमेशा, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से, आपको याद होगा, 3 शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब तक हमारा एचआर इन नजरों पे अपनी बातों का ध्यान नहीं देगा और कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे इस बात को बिल्कुल पूरी तरीके से, दे विल नॉट डीपली इनग्रेन दिस इन द माइंड्स ऑफ द स्टाफ and the cooperative society secretary and everybody else, it will really not work. I'm telling you, all strengths will go to the dogs unless we reinvent ourselves, unless we try to market our advantages and benefits that we have. We will have to surely do that. एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि कोऑपरेटिव्स की कितनी बड़ी ताकत है, देखिए कि बहुत पहले मैंने एक जुमला यूज करा था जिसपे मैं आज भी कायम हूं कि कोऑपरेटिव बैंक्स आर इमोशनली द क्लोजेस्ट टू द रूरल मासेस। उनसे ज्यादा दिल के करीब कोई है ही नहीं कोऑपरेटिव बैंकों से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से, क्योंकि मैंने बताया ना कि कपड़े मेरे तरह के पहनता है एंड सो ऑन, लाइक आई डिस्क्राइब टू यू, बट दे आर फाइनेंशियली रादर वीक. If you talk of RRBs, they have a bit of an advantage. They are financially not as strong as the public sector banks, but quite a few of them are. And emotionally, they are a little farther. That's another matter, that they are becoming still farther, the kind of recruitments that we have now in the RRBs. And as far as commercial banks are concerned, all of us will agree that financially very strong, but emotionally the farthest. Emotionally the farthest. I have no hesitation in saying that. But I am telling you, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी विल टेक ओवर सो मेनी थिंग्स कि फिर फेसलेस बैंकिंग होगी. तो अब हम अपनी ताकत को जब तक एक्सप्लॉइट न कर पाए, तब तक वो फेसलेस बैंकिंग आपको आंधी में उड़ा ले जाएगी. और वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, ओपन द डोर, लेट फ्रेश एयर कम इन. That is exactly what is happening in the banking sector over the last few years, and is going to happen in the coming few years also, and it will go at a still faster pace. लेकिन ये मान के चलिए कि जब फ्रेश हवा को हम आने देंगे, बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे हमारा मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट, चाहे हमारा मूवी मीडिया हो, ये सारी चीजों में लेट फ्रेश एयर कम इन. तो मेरा पुराना कहने का ये इशू है कि हम पोटैटो चिप्स को आने से नहीं रोक पाएंगे अगर कंप्यूटर चिप को इनवाइट करेंगे. बहुत सी चीजें आएंगी उसके साथ में, बहुत सारे फैक्टर्स उसके साथ साथ आते जाएंगे, और जब तक ना हम अपनी यूटिलिटी को प्रूव कर पाएंगे in front of our customers and in front of our employees, I think we may not be really able to work as much. किसी न किसी को बड़ा सपना दिखाना होगा कोऑपरेटिव बैंक्स के स्टाफ को. हमें अपने स्टाफ को बताना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने कोऑपरेटिव बैंक के स्टाफ को बताना होगा कि भाई तुम्हारी ये ताकत है, 54% के तुम्हारे शेयर से तुम 11% पे आ गए हो. मार्केट का शेयर तुम बढ़ा पाओ ना बढ़ा पाओ इमीडिएटली, लेकिन अपने कारवा को उस दिशा में ले जाने की तो कोशिश करो बाय इंक्रीजिंग द क्वांटम ऑफ लोन, बाय डाइवर्सिफाइंग योर एक्टिविटी. ठीक है कि तुम्हारी आदत थी वही करने की, क्रॉप लोन, ये तो सच बात है. एवरीबडी नोस कि कोऑपरेटिव बैंक की आदत थी भाई क्रॉप लोन करने की, मैं क्यों वो काम करूं जो कि जिसकी मेरे को आदत नहीं है. नेचुरल इनर्शिया होता है. लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 2012 से लेकर 2016 तक, इस मंच से कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक के आई वाज ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एसजीबी. 4 साल में रहा बोर्ड में, राजकोट में उसका हेडक्वार्टर्स था. तो उनके नेचुरली दे हैड मच मोर डिस्ट्रिक्ट्स इन देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन. उनके एरिया ऑफ ऑपरेशन में ज्यादा डिस्ट्रिक्ट से 9 या 10 उस जमाने में होते थे. तो राजकोट और मोरबी, उसमें उनका कोई मार्केट शेयर नहीं था. तो मैं हर बार बोर्ड में कहता था ये कौन सी बात है भाई, वाई आर यू लूजिंग. कहते हैं सर राजकोट और मोरबी की बात मत करो, यहां तो कोऑपरेटिव बैंक से हम कॉम्पीट कर ही नहीं सकते. कुछ भी हो जाए ये तो नंबर 1 है, उसके बाद जो सेकंड स्पेस के लिए वी विल ऑल फाइट. हम क्या अपने बैंक को उस दिशा में ले जाने की कोशिश नहीं कर सकते? कैन वी नॉट ट्राई टू डू दैट? कैन वी नॉट ट्राई टू इंक्रीज द क्वांटम ऑफ लेंडिंग? कैन वी नॉट बी एम्प्लॉय एंड कस्टमर फ्रेंडली? जब तक हम कस्टमर फ्रेंडली नहीं होंगे, कितना भी बड़ी बड़ी बातें हम लोग एचआर की कर लें, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम बेहतर बना दो, कोई बना लो बेहतर सिस्टम, जब तक हम ना कहना नहीं सीखेंगे. हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, हम में से नहीं पता कि कितने लोगों ने हरियाणा में काम किया है, एक गोस्वामी जी होते थे, बहुत पुरानी, कम से कम 25 साल पुरानी बात में बता रहा हूँ, हर को बैंक में डीजीएम होते थे. उनकी ट्रांसफर बहुत जल्दी जल्दी होती थी वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से एसटीसीबी एंड बैक एंड फोर्थ. आकांक्षा को शायद याद होगा, उस जमाने में रहे होंगे वो जब ये थी वहां पर. मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी अजीब सी बात थी. मैंने कहा गोस्वामी जी जिस बैंक में जाते हैं एनपीए कम हो जाता है लेकिन ट्रांसफर जल्दी होता है.
कहते नियम बड़ा सिंपल है, जिसके लिए फोन आता है उसको कर्जा नहीं देता हूं। बड़ी सिंपल सी बात है, जिसके लिए फोन आ गया उसको कर्जा नहीं देता हूं, चाहे कुछ भी कर लो भाई। भाई ऐसा है ना कि जो सारी जगहों से ठुकराया गया है वो तो मेरे पास आ रहा है लोन लेने के लिए, और वो भी फोन करवा रहा है, तो समझो फिर तो बिल्कुल ही नीम चढ़ा है, बिल्कुल करेला तो पहले ही था। तो अब ऐसा कस्टमर हमारे पास में फोन करवा दे तो उस कस्टमर के लिए तो भाई इसके लिए कौन से इम्तिहान की जरूरत है बताओ भाई? विच एग्जाम डू यू हैव टू पास, विच HR इंटरवेंशन यू हैव टू डू? हमें केवल अपने बैंक के मैनेजर को एम्पावर करना होगा भाई, कि तुम्हारे पास में 100 तरीके हैं, मैं भी HR में काम करता हूं, मेरे पास भी तमाम तरीके के फोन कॉल्स, तमाम तरीके की चीजें आती हैं, बट आई हैव फाउंड माय वे एंड आई एम स्टिल नॉट आउट ऑफ HR। ठीक है ना? मैंने भी बहुत लोगों को मना किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाहर हो चुका हूं। और ऐसे ऐसे लोगों को मना किया है कि आप लोगों के सामने अगर मैं रख दूं तो आप लोग सोचेंगे कि इनको भी आप मना कर सकते हैं क्या, लेकिन तरीके होते हैं मना करने के। एंड आई एम श्योर ईच वन ऑफ अस हैज टू डिवाइस आवर ओन सिस्टम्स, मेथोडोलॉजीज टू रिफ्यूज बेजा काम जो होगा वो हमें मना करना होगा। दूसरी बात, मैं आपको बहुत पुरानी एक घटना पे ले जाना चाहता हूँ। कोठिया साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अमरेली CCB में एक दफा ऐसा हुआ कि दवे साहब ने बहुत पहले कह दिया था कि निलय विल बी द फेस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर गुजरात। तो मेरा कोई किसी का कोई दुख दर्द होता था, चेक नहीं ले रहा है, कोई समस्या है किसी भी प्रकार की, तो दे वुड ऑल कॉन्टैक्ट मी ओनली। तो नेचुरली रिफाइनेंस की जिम्मेदारी भी मेरी थी, ऑल्दो आई वाज नॉट लुकिंग आफ्टर दिस। कोटिया साहब को हमने कहा 70 करोड़ की ड्रॉल होगी, बहुत दिनों से मुझे कह रहे थे, और कोटिया साहब को मैं हमेशा जय भगवान करके फोन पर बात करता था। तो मैंने इनसे कहा 70 करोड़ की अगर रिफाइनेंस की एप्लीकेशन आ गई तब तो मैं अपनी कमर तोड़ूं, 5 घंटे लगेंगे कार पे आने में। इन्होंने मुझे वादा किया था कि मैं आपको धारी गांव में ले जाकर रात को मैं आपको लायन को शिकार करते हुए दिखाऊंगा। मैं ये इन्होंने वादा किया, तो मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन 5 घंटे मैं कमर तभी तोड़ूंगा अपनी जब मुझे ये यकीन हो जाएगा कि ये रिफाइनेंस ड्रॉ होगा। मैं शायद 20-30 किलोमीटर चला था कि हमारे DDM थे अमरेली के उस समय, नीलेश शाह, उनका फोन आया मेरे पास। कहने लगे सर ऐसा है कि साहब कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब से भी बात नहीं हुई है। तो मैंने कहा फिर बात करा तो कोटिया साहब से। कोटिया आपको याद होगा, मैंने कहा महाराज अभी 20 ही किलोमीटर आया हूँ, बाकी 200 के ऊपर जो भी बाकी है सोचता हूँ कि 20 जितना आया हूँ उतना ही पीछे चला जाऊँ, इतनी मेहनत क्यों करूंगा भाई शेर को देखने के लिए केवल। इन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, आप आ जरूर जाइए। Why I am telling you all this story is that ultimately what happened, that is another matter, that next morning I went and addressed his staff, and then I could obviously take the drawal application, all that happened. But the most important thing which I am going to convey to you is कि रात को 10 बजे कोऑपरेटिव सोसाइटी के तमाम मेंबर्स इकट्ठा थे और कोठिया साहब उनको एड्रेस कर रहे थे रात को 10 बजे। उसके बाद हमने खाना खाया, उसके बाद हम जंगल गए, और उसके बाद हमने जो नज़ारा देखा उसके लिए तो मैं ताउम्र इनका शुक्रगुजार रहूंगा। वो दिखाया इन्होंने जो मैं सोच भी नहीं सकता। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज अनलेस द कोऑपरेटिव बैंकर हैज गॉट दिस काइंड ऑफ कनेक्ट with the cooperative society, its members and its staff, I don't think the bank can function well. Cooperative bank cannot operate like a commercial bank. Cooperative bank cannot operate like an RRB. It will have to work upon its human resources like this. जब तक आप कनेक्ट बना के नहीं रखेंगे तब तक बात बनेगी। रही बात इसकी कि सारी ऑर्गेनाइजेशनल प्राइड का जो मसला है, इफ आई स्टार्ट बिलीविंग दैट माय ऑर्गेनाइजेशन इज गुड, आई वर्क फॉर ए गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड आई वांट टू मेक इट बेटर, एंड आई विल एंश्योर दैट थिंग्स कैन बी मेड बेटर। जब तक हमें ये यकीन नहीं होगा कोऑपरेटिव बैंक्स को, तब तक कोई छड़ी घुमाते रहो, कोई बंसी वाला कुछ नहीं कर सकता है कोऑपरेटिव बैंक का, जब तक कि कोऑपरेटिव बैंक खुद अपने आप तय नहीं कर लेंगे कि हमें अपने HR पे काम करना है, हम मेहनत करेंगे, अपने बिजनेस इनिशिएटिव्स को लेंगे, और जो भी हमारी खोई हुई जमीन है उसको हम वापस छीन के लाएंगे। वोरा जी को शायद याद हो, हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी, और जैसे आपको याद होगा कि टाटा स्टील के एक एड में हुआ करता था, वी ऑल्सो मेक स्टील। तो हमने जो दवे साहब के टाइम पर मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की, और उसकी ओपनिंग स्लाइड थी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड ऑल TCCBs, उनका रिव्यू। और ये मेरे नाबार्ड के साथियों को भी अनुरोध है कि आप लोगों की भी एंगेजमेंट जबरदस्त होनी चाहिए कोऑपरेटिव बैंक से, और किसी से एंगेजमेंट इतनी हो न हो, लेकिन कोऑपरेटिव के साथ में अपने अपने राज्यों में एंगेजमेंट जबरदस्त होनी चाहिए। उस स्लाइड का ओपनिंग सेंटेंस मेरा ये था, वी ऑल्सो गिव क्रॉप लोन।
डाइवर्सिफिकेशन की इतनी बातें सुबह के सेशन में हुई। हमने कहा वी ऑल्सो गिव क्रॉप लोन, वी ऑल्सो मेक स्टील, बाकी बहुत सी चीजें हैं। सुन के अच्छा लगा। हिमाचल में यानी हालांकि ये बात और है कि दैट इज नॉट एन एग्जैक्ट केस इन पॉइंट, बिकॉज हिमाचल की अपनी सीमाएं हैं क्रॉप लैंडिंग की। एक तो बंदरों का बहुत प्रकोप है और बाकी क्रॉप लोन का अदरवाइज कुछ कॉन्स्टेंट्स है। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचा गया। ये नहीं सोचा हमने कि हम क्रॉप लोइंग तो कर नहीं पा रहे और हम क्या करें, ये नहीं सोचा कम से कम। ये अच्छी बात है, बट दैट मे नॉट बी एग्जैक्टली द typical case in point, I would say, but there will be many other banks who have ventured to diversify their activities. वो सब कुछ होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, मैन पावर की सिलेक्शन अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, और अप्रोप्रिएट मैन पावर सिलेक्शन के लिए जब हम तय कर लेंगे कि आईबीपीएस से ही हम पर्चा कराएंगे, यार तुम कुछ भी कर लो, हम तो अपनी प्रमोशन की एक्सरसाइज भी आईबीपीएस के थ्रू कराते हैं, और हमें छाती ठोक के कह सकते हैं कि भाई 1% का भी झोल नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तो इतने फुल प्रूफ हैं वो लोग कि अगले दिन हमको 40 सवाल भेज देते हैं कि जिसमें जिन लोगों के अच्छे नंबर आ रहे हैं उनका ये कॉमन बी वाला आंसर है। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा आंसर गलत था जो तुमने आंसर की में भेजा था। 40 सवाल, 39 क्वेश्चंस they had sent, and I think 11 they had sent for Rajbhasha. In all cases we were right. लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि दैट इज द लेवल टू विच वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर सिस्टम्स। उनकी सिस्टम इतनी फुल प्रूफ है भाई, तो हम क्यों नहीं ये तय कर ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कोऑपरेटिव की लीडरशिप को कन्विंस करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम कोशिश करेंगे कि हमारी रिक्रूटमेंट केवल आईबीपीएस के माध्यम से ही होगी। क्लरिकल के लिए तो मोदी जी ने स्वयं ही कर दिया था भाई, कि क्लरिकल के लिए तो वो हम करने ही नहीं देंगे भाई, इंटरव्यू करने ही नहीं देंगे, तो वो भी स्कोप खत्म हो गया। पर्चा दिया, पास हो गए, हो गया। लेकिन ऑफिसर के लिए इंटरव्यू जरूर करना भाई, रेड्डी गारू, चाहे कुछ भी हो जाए, ऑफिसर के केस में इंटरव्यू जरूर करना। और दूसरी बात है, ये गलती कभी मत करना कि जो तुम्हारी रिटेल बैंकिंग को लेकर जो कस्टमर से इंटरफेस तुम्हारा है उसको आउटसोर्स कर दो, ये काम कभी मत कर देना। वो कोई बाकी बैंक्स को भी मैं बता रहा हूँ, दैट्स नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल टू फॉलो। हम भी कई बार देखते हैं अपने यहाँ पे, मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है, हम भी करते क्या, नैब कॉन्स को बोल देते हैं यार हमको स्टाफ दे दो कॉन्ट्रैक्ट पर, हमारे मॉनिटरिंग कराएगा प्रोजेक्ट्स की। एफएसडीडी का कोई प्रोजेक्ट होता है, हम कह देते हैं यार वाटरशेड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, टीडीएफ का प्रोजेक्ट है, मॉनिटरिंग कर लो। जब तक हमारे नए भर्ती किए गए बच्चे अपनी कफ को गंदा नहीं करेंगे और जूते को गंदा नहीं करेंगे और पटलून का नीचे वाला हिस्सा सनेगा नहीं कीचड़ में, तब तक वो सीखेंगे कैसे। कस्टमर से डायरेक्टली इंटरफेस होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे हमारे बंदे को कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन हम उसी से कराएं अपना काम। तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी वही लागू है कि प्लीज एंश्योर, किसी ने बताया शायद कि वो मंथली टारगेट्स हैं और ये टारगेट पूरा करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए, और मुरव्वत कोई नहीं इस मामले में, ये तो पक्की बात है। मैं तो आपको बता रहा हूं, आकांक्षा कई बार कहती है कि आप भड़काते बहुत हैं। मैं तो साफ साफ अपने टीम को कह दिया था, भाई तुम 5 बजे जाओ चाहे 5:15 पे जाओ, मैं तो 5:30 पे पक्का चला जाऊंगा घर, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है व्हेन आई यूज्ड टू बी इन शिमला। लेकिन ये पक्की बात है कि कोई भी टारगेट अगर पूरा न हुआ या किसी भी रिमाइंडर हेड ऑफिस में ऊपर ये लिख के ना आया एक्सेप्ट हिमाचल प्रदेश एंड फ्यू अदर्स एवरीबडी एल्स में रिस्पॉन्ड, वो एक्सेप्ट वाले में मेरा नाम होना चाहिए। अगर वो नाम नहीं हुआ देन यू हैव हैड इट। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम 5 बजे जाओ, घर जाके ट्रैक पैंट पहन के काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, काम खत्म होना मांगता है चाहे कुछ भी हो जाए। यू गेट द पॉइंट। अपने स्टाफ को भी हमें बताना पड़ेगा यार, ऐसा है ना कि कोई वो नहीं है। मैं एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बताना चाहता हूं, उनकी बिल्डिंग बहुत सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग। मैं जब गया, आई वाज टू एड्रेस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलोंग विद मुडगल सर। उस समय हमारे सीजीएम थे गुजरात, गलती से बोल दिया स्टेट का नाम, बैंक का नाम नहीं लूंगा। मैंने उनसे कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी हैं, वो अगर तारीखें न होती तो शायद इंडिया का इतिहास 2000 साल का बदल गया होता, डिफरेंट होता। 326 बीसी की मैंने कही वहां पर, आई सेड दिस इन द प्रेजेंटेशन, कि माय प्रेजेंटेशन आई सेड कि 326 बीसी जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ, पोरस के साथ दिया होता आम्भी ने, अलेक्जेंडर का ना दिया होता, तो भारत का इतिहास बदल जाता, है ना। और जयचंद ने अगर पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया होता तो इतिहास बदल जाता। और नवाब सिराजुद्दौला का साथ देने के बजाय अगर मीर जफर ने अंग्रेजों का साथ न दिया होता तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर का आउटकम डिफरेंट होता।
आप समझ सकते 2000 साल का इतिहास केवल 3 तारीखों की वजह से बदल गया है पूरा पूरा. एंड वी हैव ऑल सीन दैट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री हैज चेंज्ड इन इंस्टीट्यूशंस आल्सो. मैंने कहा आपने 3 गलतियां करी अपने जीवन काल में, संस्था से कहा, और इतनी सुंदर बिल्डिंग बनाई. काश आपके सिस्टम्स और प्रोसेसेस इतने ही सुंदर और मजबूत होते. वोरा जी जानते हैं मैं किस बैंक के बारे में बात कर रहा हूं, जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जब होती थी तो जो सबसे बड़ा एनपीए का डिफॉल्टर था, उसका साथी जो कि बोर्ड मेंबर होता था, उसका मोबाइल फोन ऑन रहता था और उधर वो सुन रहा होता था पूरी प्रोसीडिंग्स को. कहने का मतलब यह है कि जब तक ना हम सख्ती करेंगे इन चीजों पर, तब तक हमारी इंस्टीट्यूशन का भला नहीं हो सकता है. कितना भी एचआर के ऊपर हम बातें कर ले, वो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी जो कि हम करना चाहते हैं. बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, 1:35 में कर चुका हूं ऑलरेडी. मैं चाहता यही था कि मुझे कम से कम 40-45 मिनट का समय मिले. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डन दैट. एंड आईटीडी, ज्योति उपाध्याय, Nanda ji, Dr. Bhavani Shankar, all of them, very, very grateful to all of you for having given me this opportunity of standing before everyone and sharing my thoughts. A big thank you to Chairman sir for having, permitted me to come here. निरुपम जी, of course, इनको मैं धन्यवाद कैसे कहूँ, छोटे भाई हैं, छोटे भाई को धन्यवाद कहते नहीं है, और वो भी पब्लिक में तो कभी भी नहीं कहते, है ना. पब्लिक अकेले में प्यार कर लो भाई, सबके सामने कह दिए छोटे भाई बिगड़ जाते हैं, है ना. तो इसलिए कह ही नहीं सकते इनको. और आप सब लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. कोऑपरेटिव बैंकों के प्रति मेरा दिल धड़कता है, और यकीन जानिए अगर किसी चीज के बारे में मुझे सबसे ज्यादा पैशनेट हूं मैं, तो मुझे लगता है कि कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में कुछ ना कुछ हमें अच्छा करना चाहिए. मेजर ओडी इंटरवेंशन, ओडीआई के नाम पर हो, किसी और नाम पर हो, ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं हिंदुस्तान में. पैसा कहीं से आना होगा, मुझे नहीं पता, अभी भी मेरे पास इस बात का आंसर नहीं है कि इसके पैसे कहां से आएंगे. आई डोंट नो. Somebody will have to provide for this money, but the training cannot be limited to the kind of training that we did in the case of Vaidyanathan and post Vaidyanathan. It cannot be limited only to double entry bookkeeping system. It cannot be to maintenance of common accounting standards, है ना. And it cannot be also to the preparation of the BDP of the PAX, क्योंकि आम तौर पे पैक्स का बीडीपी में क्या होता है भाई. पैक्स में जाके पूछा, यार तुम्हारा बीडीपी, हाँ सब बनाया तो था, दिखाओ यार क्या है. वो तो ब्रांच में पड़ा है. अरे यार बीडीपी तुम्हारा था, ब्रांच का थोड़ी था यार. और तुम्हें इसलिए थोड़ी था कि टिक मार्क करना है तुम्हें बीडीपी. बीडीपी तो वो है जो मेरे पिताजी ने मुझे कहा था बहुत पहले, खेलने जाते हो और रोज देर से आते हो, माँ तुम्हारी कहती देर से आए. अब क्या करूं, मेरी बैटिंग का चांस आ गया था. तो उनका बैटिंग वेटिंग का चांस आए ना आए, ये समझ लो भाई. तुम अपना टाइम टेबल खुद बनाओगे. अपना टाइम टेबल बनाया, स्टडी टेबल के सामने चिपका लो. इस समय उठूंगा, इस समय नाश्ता करूंगा, इस समय पढ़ाई करूंगा, फिर शाम को इस समय खेलने जाऊंगा, इस समय लौटूंगा, और फिर इतनी देर टीवी देखूंगा और पढ़ूंगा. वापिस आके एक बार जब खेल के वापिस आते हो तो वो जो बनाया हुआ है अपना पोस्टर या कागज पे जो चिपकाया हुआ है वो देख लिया करो. दैट इज योर बीडीपी, इट इज योर ओन प्लान. कोऑपरेटिव बैंक में छोड़ा है, बताओ यार वो बीडीपी का क्या मतलब है. तो इसी तरह से हर ब्रांच मैनेजर को अपना बीडीपी बनाना पड़ेगा. इंस्ट्रक्शन आया है इसलिए नहीं, बट वी विल हैव टू टेल देम. फॉर दिस वी डोंट रिक्वायर द परमिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वी डोंट रिक्वायर द परमिशन ऑफ एनीबडी, है ना. दूसरी बात जिसके लिए आई थिंक रघुपति मोर क्वालिफाइड देन आई एम टू टॉक ऑन दिस इशू, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज पर कई बार कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमसे कहते हैं प्राइवेटली, हमको तो ये अपने बैंक के बारे में पता ही नहीं था. हमने कहा पता क्या नहीं था, गलती आपकी है. आपने सीईओ से कहा क्यों नहीं कि मेरे को रिस्क मैनेजमेंट में तुम क्या कर रहे हो ये दिखाओ, तुम्हारी 3 महीने की प्रोग्रेस क्या है ये दिखाओ, रिकवरी कितनी थी अब कितनी हुई दिखाओ, एनपीए कितना था इसमें क्या प्रयास किया, टॉप 30 अकाउंट तुम्हारे कौन से थे, उसके लिए तुमने क्या किया, अब बताओ. कह सकते थे. और आप नहीं पूछ सकते तो कोई बात नहीं, सीईओ का दायित्व है कि वो बताए. बताओगे और फिर तुम कहो कि तुम्हें गाइडेंस नहीं मिली तो अलग बात है. बट इफ यू डोंट टेल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाउ विल दे कम टू नो. So it's very important. So many things can be done. I have many more thoughts to share. But then once again, thank you all for giving me a very patient hearing. I'm already now sweating, but that's fine. That always happens. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बर्ड का, आप सबका. Thank you.
Thank you, Nilayji. That was a very inspiring talk on human resources and cooperative banks. To express our appreciation, I call upon our CGM from head office, Shri S.K. Nanda, to kindly come on stage to hand over mementos to our panelists. A memento for our CGM from head office, Shri Nilay Kapoor. Mementos for our other participants, panelists, please. Capacity building is an integral part of human resources. Bankers Institute of Rural Development houses within it the Center for Professional Excellence in Cooperatives. We have with us Shri Nikhil Kumar, DGM and CPEC in charge, who will take us through its activities. Inviting Nikhil on stage. A very good afternoon to all the distinguished guests here. Now, in the next 5-10 minutes, we will talk about the activities that is being undertaken by the CPEC. CPEC stands for Center for Professional Excellence in Cooperatives. And under the banner of CPEC, we are doing some training or HR related interventions, जो कि बहुत ज़रूरी है. जैसा अभी नीला सर ने भी बताया HR interventions के बारे में, तो हम लोग अगले 10 मिनट इसके बारे में चर्चा करेंगे. The vision of CPEC, the stress is on having a cadre of professional staff or professional excellence in the cooperative credit structure. Why it is necessary, we all know. Yesterday and today also, we have discussed quite a lot of things about the HR aspects. If we want to compete with the commercial bank, the challenges upcoming, we need to have a competent staff, and for that, professionalism is quite necessary. CPEC works on a membership basis. Anybody जो हमारे फोल्ड में आता है, सबसे पहले उसको membership लेनी होती है, और वो membership it's of two kinds. First is the institutional membership, and the second one is the individual membership. Institutional membership is for the state cooperative bank, DCCBs, and some other institutes. And the individual membership is also open for the staff of these DCCBs, STCBs, and also for PACs. These are some of the details of the fees, etc. How this membership has to be obtained by paying of, in the case of DCCBs, they have to pay only 1 lakh rupees plus the applicable GST. But this membership is lifetime membership. पूरी उम्र के लिए ताउम्र ये उनके पास होती है. Similarly, if PACs want to avail the membership, they have to pay 590 rupees inclusive GST. There is also one criteria here. If suppose there is a DCCB which has taken the membership, institutional membership, then their staff only has to pay 500 plus GST. If they are not institutional members of CPEC, then these very staff will have to pay 5,000. So it always better that institutional membership जो है वो DCCB और STCB के पास हो. अब बेनिफिट्स क्या हैं? हमने मेंबरशिप लेनी है, देखते हैं. तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप में क्या फायदा है? सब CTI, if the CTI is there, accreditation, we do the accreditation of CTI to see whether what quality parameters, what kind of standards
के बाद अगर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं तो नाबार्ड के पास जो अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, दे कैन अवेल ऑफ. Apart from that, naturally the knowledge upgradation of staff is there because their staff will also do the certificate courses, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे. For individuals, many banks, many state governments are providing incentives. Some banks are giving one or two increments. Some banks are reimbursing the course fee and giving some lump sum amount. Some banks are also providing 2-3 CRs. This is the present membership position on all India basis. We have right now up to 30th September 2023 around 15,000 members. This figure is a bit low, but we are striving to do it to a larger extent. हम लोग ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इसको. These are the state-wise breakup. There are some state where all the all the DCCBs are members, and quite a good number of PACs. In the case of Andhra Pradesh at number 2, you can see almost all PACs are the member of CPEC. But in some state, this is quite low. We are trying to go as far as possible up to the PACs level also. एक्टिविटी जो सीपेक के पास है मेंबरशिप के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन. these 4 courses are with us. Certificate, this we run for the staff of cooperatives, DCCB, STCB, and also for the FMs of CTIs. The third number, that CTFs, CTIs, and the fourth one, the certified PACs. It's very important. It is for the employees of PACs and the secretary of PACs also. But presently, this is available in 8 regional languages. I talked about the incentives, financial incentives. The states of Odisha, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Bihar, some DCCBs in Maharashtra, Satara, and Sangli, they are also giving these. For this year, we have presently हम लोग अभी जो सर्टिफिकेट कोर्सेज अनाउंस किया है हम लोगों ने, इंटायर प्रोसेस इज डिजिटाइज और वो ऑनलाइन, कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन उसके अंदर नहीं है. अदर एक्टिविटी जो सीपेक कर रहा है, जैसे कस्टमाइज कंसल्टेंसी असाइनमेंट. लास्ट टाइम वी डिड इट फॉर द एचआर पॉलिसी फॉर गोवा. Again, for Andaman and Nicobar State Cooperative Bank, we have prepared the turnaround strategy plan. Training of trainer program for faculty members of CTIs we do. Annual case documentation competition we do. I saw in the case of APCOB, there was a mention that somebody has got the prize from CPEC for this case documentation. Then there is an annual conference of principal and directors. Yesterday we prepared, rather we unveiled one internal audit manual for the cooperative bank. This is a guidance document. Similarly, we are preparing this document, similar guidance document for loan manual. It's a loan manual also, model manual for appraisal of loan products for rural cooperative banks. Maybe in a month or two, it will also be unveiled. This is a work in progress. We are trying to digitalize our progress and to go to certain other areas also, maybe providing some kind of templates for the SOPs, annual policies, or any kind of policies that the cooperative banks are. In the case of Telangana, I saw yesterday 43 were mentioned. Now, these are our expectations from the state cooperative banks and the district central cooperative banks to help us expand our membership. Second thing, encourage your staff to go for the certificate courses that we are running. Consider providing financial as well as non-financial incentives to the staff who successfully completes the certificate course, and encourage PACs, because right now, from the level of Ministry of Cooperation to everybody, even Nila sir was very vehemently talking about the skill building of these PACs. So we want to go up to the PACs, and for that we need your support. So I will request you for patient hearing, sir. Thank you, Nikhil. I now request our CGM from head office, Shri S.K. Nanda, to share his thoughts with us.
Thank you, madam. This was not there in the schedule, but I thought just I'll take 2 minutes to share my thoughts. The thought is that why we conceived this side of kind of national conference. We could have done it in some other way. Normally the conferences are held with the equation that there are some issues and possible solutions. This is the normal mode of any conference. But we decided in our IDD head office, we thought, nah, this time we'll change the equation. We'll have the solutions, we'll listen from our experts, the practitioners, that the solutions they have found out to address those concerns and issues. So that is why this national conference was conceived and organized. And that is how the title given is Best Practices in Rural Cooperative Banks. These deliberations during the 2 days on governance, on HR, on technology adoption, on business diversification, I expect that it was very fruitful and effective. Of course, some of you got the opportunity to express yourself and showcase what you have done, but this is not enough. I understand that given a chance to others also, based on the experience, you also could have showcased the work that you have done. So we strongly feel that we'll give you many more such opportunities and chances so that each one of you can express your thoughts and your innovations, your ideas before others. And that is how the ultimately, eventually, what we want is that light should prevail over darkness. Thank you very much. Thank you, sir. We have had almost 2 days of extensive discussions and brainstorming on issues ranging from governance, technology, best practices, business diversification, and human resources. I call upon stage Dr. Bhavani Shankar, General Manager, Head Office, for the summing up and way forward. Thanks, ma'am. Very respected Chief General Managers of NABARD, Director Bird, respected experts who have spoken yesterday and today, and my dear colleagues. It's my privilege to summarize. There were very many intense discussions and several many suggestions, advices have come. There are so many points, but let me, for the paucity of time, I would talk about the key messages that have come over the 5 technical sessions and, of course, certainly the inaugural session. To begin with, yesterday, the dignitaries who have graced this occasion have brought out some important messages. The first one is the conducive policy environment. And the onus is on all of us, how do we leverage? There is a trust that is already given by government, and it's upon us how we really use that. And the second message that has come is we have to necessarily relook into our businesses and contribute significantly to the economy. I mean, that's what the whole national cooperative policy was also talking about. And the structure should necessarily look into the non-credit services that they can offer. The third point that was made by them was on the adoption of technology. We don't have much time. This is a simple single liner, and we have to embrace it immediately. Now, on the governance side, there were several many concerns that have come up on various fronts. Now, the key message here is that the regulators or the supervisors are reasonably lenient with the rural credit cooperative structure, and this lenience may not last long. So again,
we have to adopt all the good governance practices. The test cap presentation had shown several many examples. While we understand that many of them or some of them would certainly require the approvals or the processes with the board of directors and the state governments, but there are many other things like formulation of policy, adoption of policy, nudging the boards to agree to the policies, which can be taken up at different levels. And this way we can tick many check boxes of governance. And coming to the technology, the PAX computerization, the DCCBs and the STCBs have a critical enabling role to play. The capacity building and the support and handholding, to be more specific, is we expect that the STCBs and DCCB to play a critical role, not only, I mean, through the entire process. It is the pre-digitization process, and more importantly, after the PACs go live on computerization. And we had a wonderful session on fintech engagement, wherein the credit cycle is supported and enabled by the by engaging with the fintech partners. To begin with, it is worth considering if the STCBs would formulate a fintech engagement policy and drive the process of engagement with the fintechs. And the other aspect which was discussed was NABARD has shared its vision for technology adoption for the RCBs. A shared infrastructure, that is digital shared entity, is given the costs involved, the expertise that is involved, the capital cost or the operational cost, the best option at this point of time is a digital shared entity. In fact, our chairman has also emphasized on this point. We would shortly coming before you, we will be facing a structure of this entity very shortly before you. And the last session of yesterday was on the best practices at the grassroots level. It was wonderful and very heartening to note the so very many interventions ranging across the sectors. I mean, if you list out the 5 packs that are spoken, they have at least 40 to 50 interventions. It's heartening to note this. The unity, I mean, it was very good to listen to them, that they have some intervention on the social responsibility as well. The common point that is coming across all the PACs presentation was the support that was rendered to them by the higher ties, the DCCBs and STCBs. I mean, this is a lead for all of us who are present here. Now, the business diversification session, again, there are so many interventions that have been said, but all the presentations have said the strategic approach to business planning, be it engagement, be it taking cognizance of the developments in the ecosystem, engaging with the government agencies, the alignment of HR to the business objectives of the organizations. This is what and we also request, this is a request from us, that many states we do have PDCs, that is PACs developmental cells, and the BDPSs. Kindly leverage. Please see that these entities are optimally used and continued. And the last session, that is on the human resource, the issues that have brought up are aging profile of the staff, the lack of appraisal skills, and the technology skills. This warrants a relook at our HR, a review of the HR policies, the recruitment and capacity building measures. We suggest that RCBs to form a HR policy and pursue with the state governments for adoption, if not already done. And we also, the session also brought out an important aspect, that is the softer approach to, softer interventions to the human resource management. And Rajkot DCCB as well as Srinath Reddy ji has clearly shown us very many examples. And the last the last presentation by CPEC, Nikhil ji has told us
They have a well-established system of accreditation, standardization of the modules. And the point here is RCBs need to intensify their engagement with CPEC. From our end, from NABARD, we have clear plans of strengthening the CPEC, and we will again come back to all of you shortly for consultations on strengthening of the CPEC. So this is all quickly I could summarize. Thank you very much. Thank you, Bhavani ji. All endings are also beginnings. We just don't know it at that time. I request our Joint Director, MS Shafali Agarwal, to kindly give the vote of thanks. थैंक यू मैम। समय आ गया है इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को अल्प विराम देने का। अल्प विराम इसलिए क्योंकि इस सम्मेलन से जो कार्य बिंदु निकले हैं उस पे सतत कार्य करने की जरूरत है और समय समय पर उस पर फिर से मंथन करने की आवश्यकता होगी। बर्ड और सीपेक की तरफ से हम इसमें इस कार्य के लिए जो भी सहयोग की अपेक्षा होगी नाबार्ड के द्वारा, हमारे डीसीसीबीज के द्वारा, सहकारी संस्थाओं के द्वारा, उसको हम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये जो 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ, इसमें हम सब ने देखा कि देश भर के शीर्ष स्तर से लेकर आधार स्तरीय तक पे जो पैक्स लेवल तक लोग संस्थाएं काम कर रही हैं, ग्रामीण सहकारी ऋण के संरचना के अंतर्गत, उन सब ने इस एक मंच पर ला पाने में ये सम्मेलन सफल हुआ है। चाहे वो देश का उत्तरी सीमा हो या दक्षिणी या पूरब या पश्चिम, इवन हमारे साथ में यहाँ अंडमान निकोबार से भी यहाँ पर प्रतिभागी आए। इस वृहद सम्मेलन की जो परिकल्पना है वो हमारे अध्यक्ष महोदय श्री शाह जी के भी द्वारा की गई। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं अपने प्रधान कार्यालय संस्थागत विकास विभाग के चीफ जनरल मैनेजर श्री JS उपाध्याय जी, श्री SK नंदा जी का, कि उन्होंने बर्ड लखनऊ को ये सुअवसर दिया कि हम इसमें एक्टिव भूमिका निभा सकें। धन्यवाद सर आपका। इस पूरे सम्मेलन को 4 भागों में जो सेशंस किए गए, उनमें था एक बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी और HR, और इन सभी सेशंस को गाइड करने के लिए जो उसको दिशा दी, उसके लिए हम सभी सेशन चेयर्स जो हमारे मुख्य महाप्रबंधक महोदय प्रधान कार्यालय से आए और श्री रघुपति जी, उनका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और उन सभी सेशंस में एज ए पैनल मेंबर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आए, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद IDD की तरफ से और बर्ड की तरफ से। इसके साथ साथ हम धन्यवाद देते हैं अपने डायरेक्टर श्री निरुपम मेहरोत्रा जी को, जिन्होंने कि हमको इस सम्मेलन को इस सफल आयोजन के लिए हमें समय समय पर गाइड किया। एक धन्यवाद ज्ञापित हम करते हैं अपने कल के इनॉग्रल सेशन में जो हमारे मुख्य वक्ता यहाँ पर रहे, श्री BL मीणा जी, जो कि RCS हैं यूपी गवर्नमेंट के और प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोऑपरेशन भी हैं। उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के सहकारी आंदोलन के समय में जो कार्य चल रहा है उसके बारे में जो अपने विचार रखे, उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि ये कार्यक्रम बहुत बृहद रूप से किया गया, 2 दिवसीय किया गया, और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई है वो आप लोगों ने निभाई है, जिन्होंने पूरी प्रतिभागिता से, पूरे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होकर इस पूरे सम्मेलन में भाग लिया और अपने विचार यहाँ पे प्रस्तुत किए। दूसरा, जो हमारे यहाँ पर पूरी टीम हमारे संग सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रही है, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, बर्ड के फैकल्टी मेंबर्स, NBSC के फैकल्टी मेंबर्स, हमारे NBSC के प्रिंसिपल सर मलिक सर, हमारी टेक्निकल टीम, हमारे हॉस्टल्स के जो हॉस्टल्स और लॉन्च को देखने वाले हमारे जितनी भी सपोर्ट सिस्टम है, उन सब का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम इस 2 दिवसीय कार्यक्रम को सफल बना पाए हैं। धन्यवाद।
Thank you, everybody, for being great participants. Lunch has been served. We request you to refresh yourselves. Thank you. Ultra beats on the track.